we were talking about कि भाई we have this different TA system in Bosch product portfolio. So first of all, we will understand that what type of product portfolio we are having and we are catering in Bosch. So first of all, this if you are saying that this IP-based digital public address and voice alarm system. So that is called Presenza, which we have with us. In Presenza, if you see, there will be a controller, there will be amplifier, there will be call station, keypad, fiber interface, power supply. The training which I have conducted last time, I have taken these points. Uh, After Presenza, second, we have this digital public address system. So the Presenza is completely IP-based system, and this digital is a hybrid system, we can say, where your controller to controller communication can happen on IP, but other all communication happen physical cable only. So that is Paviro. After Paviro, we have digital metric system also. In digital metric system, we do this 8 channel input and output, and simultaneously we can play different music at different location in digital metrics. We called it at Plana metrics. So first of all, Presenza, then Paviro, then Plana Matrix, and then Plana. In Plana, you know very well that we have this 6 zone controller and router and call station and amplifier and other things. So that is comes under a Plana system. After that, all other mixers, amplifier, power amplifier that is used mainly for standalone system. Volume controller we mainly use for this volume controlling for any speaker and other thing. And we have different kind of speaker, like all the ceiling speakers are there, all the metal fire domes or basic dome speaker, 4-watt speaker, 6-watt speaker, 20-watt, 30-watt speakers are there in Bosch. Some of the products are project-based products, so we give price on project to project only on the basis of quantity. And some of the product are routine product which comes under Plana, which pricing you are already having with you. We also have this cabinet speaker range with us. Same in cabinet speaker also we have some of the project range series like EN54 certified speaker, uh, project based model, and normal cabinet speaker also we are having. The pricing have already shared with you, which we are using. Apart from that, column speaker also we do, but column speaker again rarely we promote or rarely any requirement comes. Sound projector also similar way, rarely we promote or rarely requirement comes. Horn speaker also are there, and line array speakers are also there. So you can see that total 190 product line item in PA system we are having. I mean, I can say it's not completely 190 product, but around 150 or 160 product we are having. The what you need to understand that these all product range, each and everything you do not need to remember. The only concept it is there which you have to understand that in Presenza, Paviro, Plena, Plena Matrix, ceiling speaker, cabinet speaker, horn speaker, projector speaker, and volume controller. These we are catering with us. Normal speaker you already know, like LBD0606, LC3UM06, like 1938 amplifier, mixer amplifier, and all-in-one amplifier that we all know very well. So now these we have talked about public address system. In conference system also, we have a majorly 3 to 4 type of conference system. One is basic CCS 700 conference system. Then second one is CCS 900 conference system. Then third one is CCS 1000 conference system. Then Dicent is flush mount and table mount conference system. Now in conference also again you can see that total product code is 214. So at least minimum 200 product codes are there. Again, you don't need to remember each and everything. The basic idea of the system should be there. Like if we talk about conference system, there will be a controller, there will be a chairman unit, there will be delegate unit, there will be a cable. These by using these 4 system, your complete conference system will happen.
In addition to that, we use this additional mixer amplifier, power amplifier, wireless mic for input purpose. So in PA system and conference system, we are catering these things. Now, before handling any requirement or before handling any BOQ, we must have to understand the requirement very well. Sometimes what happens that we unable to go through the BOQ also, we unable to go through the quotation requirement also. Due to that, there are some misunderstanding or miscommunication happens. So better we get clarity from client side or from end user side. So the more clarity we are having with us, the more good way we can stand in terms of competition, in terms of solution, in terms of price and everything. uh, Basic PA, I guess you all know very well our product range. We have seen that Plena, Paviro, Presenza, conference system, TCS 700, 900, 1000 dice. Now, BOQ designing structure, public address, conference purpose, application, file integration. So, if I get input from you, if any kind of this requirement comes, what comes to your mind? First of all, if anyone can say from your side, either Sanjeev ji, Ranju ji, or I Lindsay will ma'am. explain actually the scenario. I will explain Yes. one. Okay, suppose I am working one large organization like I have one customer called Apollo Hospital. Okay, Bangalore. So entire Apollo Hospital, I have done the cameras and the voice two-way audio, full duplex audio. I have enabled through camera itself. That I only did it. So because we didn't have any solution, so I got the PLC controller and developed the solution dedicatedly, and we have given the input to the camera, mic, all those things, and it is working fine. So for example, I am telling that it's they have multiple, for example, multiple area hospital which is very big. So hospital, we want the mic announcement like, doctor to the, assume that there is a one big hall and 4 5 rooms. Okay, so they will tell us to see what are the parameters we need to identify, that how to suggest the products. This is a requirement one hospital is going to be construct in a new hospital, Apollo. So they told us to see, suppose for 4 5 rooms, if they want, what are the components to be suggest basically. So, I mean, before suggesting anything or before giving any BOQ, first of all, we need to understand their application area, that what is their going to use. There are 3 to 4 things only happen. One is they want to use for only announcement. Second is they want to use for integration with fire alarm system and automated evacuation that they want. Third, they want to use certain area for background music also. So there is only three probability. One is announcement, one is background music, one is evacuation. And the combination of that thing, you can do anything. I mean, whether you want evacuation with announcement, whether you want evacuation with background music, or whether three of things include you want. So Okay. these, once we understood, we can suggest the solution. So first of all, we need to ask them a question: for what purpose they are going to use a public address system. Because more than these three things, I don't have, or I don't think so that anything is going to be used for public address system. If you have something in mind, you can tell me. With No, PA system, no, actually, we don't have. See, since it's a, some people will ask, I have 4 rooms, I want the PS system. So some people will give the full structure and design. Few people Kishorji, will see, not give. So we that case, we at least to identify. we need to focus on the root cause.
Once we have the dimensional thing or area thing, or that is all secondary part. The Hmm. base of any public address system is what is the purpose of that system. Once you know the purpose of that system, other all parameters you will eventually able to identify. Let's say Okay. example, in your Apollo hospital, if you probe them or if you ask them that what is their requirement, so they will tell you that we want to monitor certain premises and we want to make the announcement if anything happen. So again, the probability number one, they want to make announcement. Now, second, they also will tell you that we also want to integrate with fire alarm system. So in case if is there any fire or if any physical person is not there, the scheduler or announcement automated should happen. Again, it's a evacuation with fire alarm integration which we are providing. Third, they might tell you that in certain area like cafeteria or lobby area or reception area, we want to play a light background music also. So these three things, once you know, then your mind will automatically work that, okay, the basic we have covered that what are their purpose, what is their requirement. Once we know that requirement, the our second question will be how many zones do they want? Because in any kind of premises, there will be a different area, there will be a different floor, there will be a different section. So according to that, any end user may would want that they want to make announcement in certain area or certain premises by zoning. So we have to understand whether the building is total 11 floor, they want to make announcement floor wise, whether the total school area and they want to make announcement classroom wise, whether there are different department like marketing department, HR department, purchase department, sales department or manufacturing department, or they want to play a music department wise or make announcement department wise. So the first we have understood what is their application area. The second we will ask them what number of zones they are looking No, how for. to, so for example, number of zone means like whether it's a counted in the area or the room wise or floor wise. It depends on the end user how they want to utilize their number of zones. See, I can cover whole building in single zone also. I can Okay. cover whole building in six zone also. I can cover whole building in 32 zones also. It is up to me that how would I want to utilize the system. If I would have a six zone or a six floor building and if I want to make announcement floor wise, I will say that I want six zones. So the zones is identified by the end user. If we want to suggest, we can simply suggest by floor wise or by any department wise. But we, when we don't know that thing, so we can simply ask them that you will get a six number of zone in planar controller or you will get a 12 number of zones in Paviro controller, or by adding a router you will get additional number of zones also. So this is how you can utilize the system. So once they know that okay, they are getting total 36 number of zone in Paviro with the one controller and one router, so they can think and they can decide that okay, and now what are the area they want to identify, like there is a reception area, lobby area, restaurant area, swimming pool area, bar area, so they can decide by themselves that how they want to utilize the system by zoning. It is not compulsory that each and every zones they have to cover, each and every rooms they have to cover. They can take a group also, like group of five room and there will be zone one, group of six room there will be zone two, group of seven room there will be zone three. They can also do that way. So there Okay. is no particular any kind of terms and condition or any kind of compulsion that this is how only zones would be divided. The zone is only area which end user wants to use, utilize to make announcement for background music or evacuation purpose.
and they can choose by themselves. Okay. Right. Understood. So I hope this concept is understood by Renju ji, Sanjeev ji, and Lancy ma'am also. Yes, yes. और फिर एक और चीज इसमें लेंथ ऑफ द जोन इज नॉट, ऐसा कुछ है क्या, इतने जोन इतने लेंथ में ही कवर होना चाहिए करके? नहीं है ना, दैट विल ऑल डिपेंड नहीं ऑन नहीं, एम्पलीफायर ओनली, राइट? any speaker line, any zone output you are getting from your controller, you can take it up to 1 kilometer by using 2.5 square mm cable. If you are using a 1.5 square mm cable, then the length would be a little lesser, around 800 meters. But yes, from your controller, you can take it up to 1 kilometer maximum if you want to use. More than 1 kilometer also, like 1200, 1300, you can do. But in that scenario, might you have to use or you have to give additional power, because whenever your signal goes longer, it continuously drop downing. So when you are giving additional power, it will run a good way in longer distance also. ओके. Right. So the first thing we have to understand the application area, usage area. The next thing we have to understand the number of zones. The third thing we have to understand that announcement point, from where they want to make announcement, from where they want to control these things. Ideally, what happened that controller, amplifier, and other all things will be placed at your server room in your rack. The call station placed at your reception area or your HR area or your director area, or if we talk about school, in your principal cabin. So that call station directly connected to your controller. So if you want to make announcement from your call station, you can do that. So we have to understand that uh, from where they want to make the announcement. So the third thing, announcement point. First one is a basic requirement is application area, usage area. Second one is zones, and third one is the number of announcement. The fourth is what type of speaker they want to use and where they want to use. Where the POP is there, or ceiling to ceiling is there, or cabinet speaker you want to use, or horn speaker you want to use. So there, normally what happened that any BOQ when you receive, it is already mentioned that they want to use ceiling speaker, they want to use cabinet speaker, they want to use horn speaker. These all speakers are a very secondary part, because ultimately that speaker they do is providing output from your controller or from your call station, whatever input you have given, the output you are getting from your speaker. So the uh, fourth thing you have to understand that what type of speaker they want to use and what power of speaker they want to use. So when we say power, ideally you can consider in layman language that 1 meter is equal to 1 watt in diameter in terms of ceiling speaker. So any ceiling speaker you use, 6 watt ceiling speaker, it will gives you output or it will cover your area 6 meter diameter. Again, the calculation part or speaker area part may not be come to you, because you might cannot go into technical, because the drawing which you receive, you share drawing with Savan. But yes, the basic layman language, you can understand that any one 6 watt ceiling speaker can cover a 6 meter dia area. Once 6 you meter, identify, 6 meter dia area, 6 watt. yes, correct. 1 square meter is equal to, it will be like normally if you considering 1 watt. You can So in a very layman language, in 10 by 10 feet room, you can use one single speaker of 6 watt. 10 by 10 room. Any scene in your cabinet? Is it Hardiji? Renjuji, that is a concern to your basis of your end user.
where they want to use speaker. If there are POP, they can use in your POP speaker. If there is no POP, they can might tell you they want to use cabinet speaker. Again, So again, I this, have one doubt, Hardik ji. Suppose yes, these, for example, normal house or anything. If like auditorium kind of thing, it will be very ceiling will be very high level. Okay, that time maybe we can't suggest this type of 6 watt or 8 watt. We may need to give more, no, because that is a very high. Your announcement will the voice pressure SPL sound pressure level with very distance will be vary, no. So you told that 10 by 10 room, that is for small size room, normal room. If it is very Kishorji, height this like is a 20 feet or 30 feet height, so speaker will Kishorji, vary, no. this is a public address system. It is not a pro sound system. There is a difference between public address and pro sound. Pro sound that is used for auditorium and other purpose, that is their main purpose is only for line array speaker and sound system. That is covered by Mukesh Bhai. So Okay. any auditorium requirement comes or any kind of high sound requirement comes, then we will suggest electro voice solution only, where we have a good sound quality speaker which gives you a good sound output. So for auditorium thing or any kind of banquet area or maybe a high quality restaurant area or swimming pool area, there we can suggest a speaker of pro sound. The ceiling speaker and this Bosch speaker always and always used for only these three application, as I told you earlier. One is for light background music, a very light background music, a very light, ekdam mild music, announcement or evacuation. There is no other usage of this Bosch public address system and voice alarm system, It's okay. right? Understood. Yes, sir. Okay. As you told, it is okay announcement system. It is correct. As you told, it is very correct. And okay, likewise, if it is in a classroom or some lengthy classroom or some seminar hall, one announcement system, not like this professional audio, some announcement system only for announcement purpose only. Whether the 6 watt will meet the purpose, means it is quite height and with some the some truss work ceiling. So Maybe we it is. have this other speaker also. We don't have only 6 watt speaker. If you see your price list, you will see that we have other speaker range also, like 15 watt, 30 watt, cabinet Yes, speaker. yes, 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 yes. Yeah, So these all speakers are used uh, like if you say that you have a little bit bigger classroom. yes, So yes. what you will do instead of 6 watt speaker, you will use 12 watt speaker. Okay, fine, fine. That is I have right given because you just a small example that you can know that okay, 6 watt speaker can cover this much area. So it is obvious that you, if you are going to use for a bigger room, either you have to increase the quantity of your speaker or either you have to increase the power of your speaker. So whether you can choose a 30 watt speaker, 12 watt speaker, 20 watt speaker, 15 watt speaker, or either you can increase the number of speaker in your related area. okay, understood, understood. Because why I'm asking is normally the wall height is some 8 feet or maximum 9 feet only, but in some cases it will be higher. At that time, we have to increase the speakers, the wattage or number of speakers. That Yeah, is what that you I can always do. That you can always understood. do. Understood that one. Okay. Okay. Right. So first we have understood the basis of your the application area, usage area. Second is your number of zones. Third one is your announcement point. Fourth one is your number of and type of speaker. Fifth, it is there. It is not mandatory, but sometimes people wants. They want to have a local volume controller to control the music of certain area. So there we can give them a separate volume controller also. So For these each speaker, five para for each speaker, right? either for each speaker or either if your number of speakers are together, like 3 to 4 speaker or 5 speaker of 6 watt, then For we that have particular a volume. for a particular room, we can control from that controller, right?
from particular room also, from particular multiple room also, it is all depend on us that how we want to give Integrate a solution. solution. Whether the end user is saying that they want to control a 10 number of speaker through a single volume controller, there we can give them 100-watt volume controller. Whether there is only one or two Oh, speaker, we can give them now, 12-watt volume controller. now based on number of speakers, the volume control's wattage will be higher, right? Correct, right. Okay, understood now. So always there will be a two thing. First thing, your amplifier power always should be greater than your total number of speaker load. Like if you are using 6 watt 10 number of speaker, then your amplifier should be at least minimum 60 watt or more than 60 watt. It's simple as that. So you can understand by checking your BOQ whether the requirement and the solution is given or the suggested is suitable accordingly or not. Then you can change somewhere. I understood. I got the point. I mean to say, suppose, for example, 6 watt into 10 numbers requirement, if they are mentioned, we may need to suggest that amplifier should be more than 60 watt, correct? Sixty or more than 60, not less More than than 60 16, is not below suitable. 60. We can't suggest 40 watt because the speaker Yes, power is more than the controller capacity. So the load balancing will not happen. So to the maintain the load balancing or give the power, we should have a backend controller which is above the speakers count. Correct, now watt count. correct, right. So now generally what happened that any BOQ you receive, in any BOQ you will see they have asked a certain number of zones. Whether they have mentioned they want 4 zone system, whether they have mentioned they want 8 zone system, or if they have mentioned they want 32 zone system. So on the basis of that number of zones, you can decide that what system you want to propose, or you can ask with them that sometimes what happened that in specification they have mentioned that they require 8 zone system, but actually their requirement is 6 zone system only. So once you ask them or once you check with them, you can modify a solution little bit and you can suggest accordingly. Right. So I'll open this prerequisite file also, then we can understand in better way. Meanwhile, these 5 parameter which we have discussed, is it understood by all? Yes, Hardik yes. ji, I have a query here, small query. Yes. We were talking about local volume controller. See, actually, Okay. how do we connect this local volume controller to the system? Because I have not understood this. Sanjeev, any It of your is it speaker is. cable, Uh-huh. any of your speaker cable is coming from your controller. First Hmm. of all, that cable is goes to your volume controller, and then from your volume controller, that cable goes to your speaker. Speaker. So Okay. the controller is having a line transformer. By using that line transformer, you can control your volume of your certain zone speaker, Okay. right? Okay. Fine. Controller So to speaker. now we will open this prerequisite area, pre-design question. Uh, we have covered this thing quite number of time, and we have shared this thing also to all in my training folder. Also, this thing is there. Can you see these questionnaires? Yes. Type of system. Yeah. The Yes, we first can see. question, the first question is, I'll read the type of the systems need to be asked with the customer, analog or digital. Okay. Correct. And second is standard and certifications are required. Standard and So if normally hotel kind of things, they will, if it is 5 star above, they will definitely ask the standard and certification. Total number of zones we can understand.
total number of speakers or zone. Type of speaker is different for different area, ceiling, cabinet, horn, projectors, pro sound. Application of the system, evac only, evac or BGM or BGM only. Background music, no BGM. Okay. So total number of Yes. channels required in the system, one or two or multiple. So here I have one question. Number of channel is required, one or two or multiple. Why? It means multiple means. I'll tell you what is channel. First of all, we need to understand the channel and zones are different things. So we will go through one by one. When we talk about this certification standard, so where this standard is needed, like if you're giving this system to a hospital, if you're giving this system to industrial area, or if you are using this system mainly for emergency evacuation voice alarm purpose. So by using this system, they need a certain confirmation, they need a certain parameters which needs to be followed. And for that, they would want that our system is certainly identified. Like if you take an example that our LBB 1990 is EN54 certified. So EN54, again, it's a European standard and there are certain norms which we follow by designing that system. I guess that we have already covered in our last to last training that your dual speaker circuit line should be there, your redundant amplifier should be there, pre-recorded messenger, it should be there, and the speaker line observation, it should be there. Once you have this all facility in your controller, then and then only your controller is EN54 certified. So the standard are there for a certain premises. If the end user or any kind of client is needed that certification, we can ask them and we can suggest accordingly. Number of zones we have already discussed. Number of speaker zone wise. The number of zones is different and zone wise speaker calculation is different. If you consider that one room is equal to one zone, but if your room area is 20 by 20 or 30 by 20, then again you are going to use a multiple speaker in that room. So your particular that zone is covered a four or five number of speaker. So that you can check with your customer. The type of speaker that we know that ceiling speaker, cabinet speaker, horn speaker, projector and pro sound speaker, it's different and we can suggest those speaker according to area. Like for auditorium, you suggest pro sound speaker. For outdoor purpose, you suggest horn speaker. For indoor and high rise, you can suggest cabinet speaker. For your small room, you can suggest ceiling speaker. Application of system, we have already gone through EVAC only, EVAC plus BGM and BGM only. Total number of channel. Now the channel and the zones are different. Channels means it's kind of a way, like whenever you want to make announcement or whenever you want to make a multiple announcement zone wise, you can use your channels. Kishorji, you are getting this? Yes, yes. It means So multiple Input. zone wise announcement. We are multiple using the zone wise channels. announcement. Uh-huh. See, like I'll give you an example. You go through airport, right? Hmm. In your airport, there are a number of gates. One, Correct. two, three, four, five, six, right? Correct. And there are continuous announcement at different gates for boarding or departure of different flights. Correct. So for that purpose, they will require that they want to make announcement, a multiple channel they want to use. So let's say example, they have 100 number of zones and Hmm. they have a 10 number of channels with them. So by using that 10 number of channels, they can make a simultaneous announcement or simultaneous message broadcast. Same time, maximum up to 10 number of zones or group. Okay. So Each for channel that we can purpose, each channel we can do 10 numbers maximum. no. I have given you an example that Okay. from Okay. your 100 number of zones, if you are going to utilize a 10 number of channel,
ideally in your any smaller application or your small area, you will need a two channels only, because nobody going to use simultaneous announcement feature according in multiple zone. Always they are going to make announcement zone wise only or all zone only. So it is very rare application, a kind of airport where they are going to use a maximum number of channels and they are going to utilize that also. In any small application, if you even ask for hospital purpose, school purpose, or industrial area purpose, or any kind of small church or anything, they are going to use maximum single or two channel purpose only. The two channel is also there that once they are playing a music at certain area and same time if they want to make announcement in different areas, they can do that. But more than two channel or four channel, nobody is going to utilize. So what you can keep this in mind that you can understand from your end line that whether they want to have many number of channels or they want to use a many number of channels simultaneously or not. If it is the case, then we can discuss something or we can check or we can suggest system accordingly. Okay, understood. ओके तो हार्दिक जी चैनल मतलब अभी तक भी जितना भी है उसमें मुझे इतना समझ में आया है कि चैनल का ये मतलब है कि इफ कैसे बोले, अगर मेरा इट्स काइंड ऑफ अ प्रिंसिपल्स ऑफिस और टीचर्स ऑफिस जहां से हम अनाउंसमेंट कर रहे हैं, बट जोन वुड बी वेर डिफरेंट डिफरेंट क्लासरूम्स और डिफरेंट फ्लोर्स, वो हो गया जोन, राइट? यही हुआ ना मतलब? करेक्ट, राइट। ओके, सो देखो इट मैं शुड बी एग्जांपल आपको दूं कि हम एक साथ अभी 5 लोग हैं, ठीक है। अभी हम एक साथ अगर 5 लोग बोलेंगे ना तो भी सबको सुनाई देगा, तो हम 5 चैनल यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर मैंने ऐसा यूज कर लिया कि एक टाइम पे कोई भी 2 लोग ही बोल पाए, तो मैं और आप अगर बोल रहे हैं तो बाकी सब लोग नहीं बोल पाएंगे, बिकॉज हमने 2 चैनल सिलेक्ट किए हुए हैं। सो दिस इज द चैनल दैट एट द सेम टाइम maximum how many inputs you wanted to utilize of your PA system. So ideally in any PA system, same time they are going to use a single channel only. But in worst scenario, if we consider maximum 2 or 4 channel, any end user can take as a utilization of that PA system, but not more than 4 channels. ओके। Right. Uh, See, I would suggest to do not complicate this much. You have a layman idea in your mind that our Plena system supports single channel operation, our Paviro system support two channel operation, and our Presenza system support and 100 number of channels operation. So whenever if there is a requirement a simultaneous music in your simultaneous zone, more than 4 number of channel or 2 number of channel, we can always suggest Presenza only. Otherwise, we can go with Plena and Paviro. Is this understood by all? हार्दिक जी, इसमें ना हमारे पवीरो में जैसे हम लिखते हैं ना PVA 4 CR 12, तो 4 इनपुट चैनल है ना, तो आप 2 कैसे हो गया? वो इनपुट चैनल है, हम इनपुट दे सकते हैं, बट आउटपुट आपका जो आएगा वो एम्पलीफायर से आएगा, और जो एम्पलीफायर इज सपोर्टेड ओनली 2 चैनल, दैट इज व्हाई देयर इज मेंशन 2P500. When your amplifier is a 2 channel amplifier, by any means you are going to have an output of 2 channel only simultaneously. पवीरो में? Paviro में. ओके। ओ 2/500, राइट, इसलिए। Yes. हार्दिक जी, Ranju ji, yes. हार्दिक जी, ये हमारा Yes, clear. ये प्लीना में हमारा एक एम्पलीफायर ऑल इन वन एम्पलीफायर है ना, उसमें 180 360 में 2 चैनल लिखा होता है, वो क्या है?
तो अगेन वो 360 में यही कॉन्सेप्ट आया, जो 2 चैनल है ना संजय जी, कि उसमें आपको हाँ अगर अलग अलग एरिया में अलग अलग म्यूजिक प्ले करना है तो आप कर सकते हो, विच यू कैन नॉट डू इन योर 180 watt amplifier, because 180 watt amplifier is a single channel amplifier and your ओके 360 watt amplifier is a 2 channel amplifier, ओके ओके ठीक है। right? रंजू जी, किशोर जी, अभी तक क्लियर है यहाँ तक? नहीं, जो चैनल का क्लियर हो गया, बिकॉज आई वुड से दैट if we wanted to play multiple zones simultaneously, then we use single channel, correct? If you want to use multiple zones simultaneously, then you use a multiple channel. हाँ, मल्टीपल चैनल, वही मैं Yes, बोल रहा हूँ, लाइक चैनल के थ्रू ही वो, दैट इज द रीजन वी आर यूजिंग द Single चैनल. one shot it is single channel, right, sir? correct. ठीक है. Then 8 number of is system placement. You can ask that how they want to place the system. They want a centralized system or they want a decentralized system. So let's say example, if there is a multiple building and they want to destructure the system. They do not want to centralize it. They want to have an amplifier or call station in each and every building, and then they want to connect all together. Then that the example of decentralized. And similar way, centralized, if in your single building you want to place all the equipment in your server room and you just wanted to place your call station in your reception area, that is a centralized system. So you can ask whether they will want a centralized solution or decentralized solution. Then the total number of call station required, how many number of call station they want, that we have discussed at your reception area or director area or principal area or whatsoever they want to use for their application, they can suggest accordingly. Function to be performed using call station. By using call station, we have a facility that multiple function we can suggest or we can utilize that call station for many things. From that, you can only select zones, or you can also play a background music also, or any customization also. If you wanted to do in your call station, you can do that. So it's just a question that what kind of function they want to perform using call station. So we can have idea if there is any programming or any things need to be changed in call station. What are 11th number the you can, customized? sorry. No, I have to give one question in this regard. Okay. As you told, the functions to be performed using call stations. Their customized functions you had mentioned in that document. Okay. Then can you say one example for this customized function? The customized function, which means that you can program that any button, or let's say example, by pressing any button you wanted to play a pre-recorded message to certain area, so you can do that also. Okay. By using that programming button. Oh. If you want to use a single button and you want to select a multiple number of zones, so you can program that way also. So in our Okay. Paviro call station only, let me reframe the question. In our Paviro and Prasensa system Will call station only, we this can facility. have this kind of function. In Plena, it is But not there. Plena is simply an analog not system. okay. Understood. No, understood. Okay. Right. So now 11 point is distance between different controller, router, call station, amplifier. You can always ask or you can always check that what will be the distance between this controller, router, call station and amplifier. So according to that, you can have the idea. For basic, from your controller to call station, maximum you can stretch your any call station up to 1 kilometer only. In Plena, your router can be also stretched to your 1 kilometer only. So if there is a system they want more than 1 kilometer, then we have to suggest some alternative option, whether we can suggest Presenza or whether we can suggest a multiple Paviro controller which connected to single network. The 11th point is understood by all.
Yes, we Kishorji, understood. Sanjeev, I understood. So to okay. extend the what I listen is a few minutes back, which you have explained, from the controller to the router or any kind of the cable like speakers, we need to use 1.5 square mm Up to 800 cable. meters. Huh? It will Kishorji, in I didn't 1.5 square use a mm. word of square and cable right now. We are talking about only distance from controller to your call station connected to your Cat5 or Cat6 cable, from your amplifier to speaker only. Again, I'm Okay. refraining this, your speaker only connected to your two core cable, whether that can be 1.5 square mm up to 800 meter, or whether that can be 2.5 square mm up to 1 kilometer. Okay. From your controller to call station or your router, in that scenario, you have to lay Cat5 or Cat6 cable only, which is supported up to 1 kilometer only, not more than 1 kilometer. Cat 5e also will be supported. Cat 5e also. See, we need only 8 core cable. So any 8 core cable, Cat5, Cat6, Cat5e, or any kind of cable will be okay. Okay. So controller to the router, it is any controller to controller. We need to any 8 core cables, right? We can give cat Not say cat 5 controller to controllers, Kishorji, controller to router. controller to router. Okay. Yes. Okay. Or controller to call station. Just a minute. Just a minute. I'll write it down because we will forget all those things. Control. Okay. Because this is the difference. Now there are a lot of difference I'm finding. Okay. So are we clear on this point? Yes. Okay. Then your 12 number of point is in network architecture is central monitoring control software is required or not. So sometimes what happen in your command control area kind of thing or in your server room, they also would want a software, graphic user software, which we provide in Paviro and Presenza only. So we can ask that whether they want a central monitoring or central control software also is required or not. Okay. And the point is type of integration with FAS, whether they want to use a soft integration with fire alarm system or hard integration. With soft integration, we may need to give any additional hardware or any output or any limitation will be there. Normally in our Paviro and Plena, we provide a solution of hardcore connection only. So though we can suggest or we can check whether they wanted to use any soft integration or the hard integration would be okay with them. Then the 14 number is any controller redundancy is required or not. So you know what redundancy means, right? In your CCTV or NVR, you must have Redundancy used is a this backup word. actually. Redundancy is a failover backup. So here also we can suggest or we can ask whether they want a controller redundancy too or not. In controller redundancy, if it is needed, we have to give a number of controller accordingly. And there is I guess, two type of redundancy, hot redundancy and cold redundancy. Am I right, Kishorji? Yes, yes. So in hot redundancy, what happened that your controller automatic should take over the primary controller in case if your primary controller fails. And in your cold redundancy, you have to do that changeover manual where you have to switch off your primary controller, switch on your secondary controller, and you have to change the connection accordingly. So that is a cold redundancy.
So you can check whether any controller redundancy they want or not. Similar way in amplifier also you can check whether they want amplifier redundancy or not. Then the point is speaker line monitoring is required or not. Speaker line monitoring where they will require if they want to use a complete EVAC certified system or EN54 certified system and they want to observe or they want to check speaker line regularly. So we can ask them whether they want that feature or not. One question I have, Hardik ji. The thing is that Yes. controller redundancy is required. So whether it's automated, okay, hot. That is, suppose it will be done only in Paviro and Presenza or Plana. Maybe it is possible. It will be only possible in Presenza, not Plena, not Paviro. Ah, okay, okay. So what it will do? What are the like? How can we identify that the redundancy? Like how the methodology? Like suppose for example, my controller has failed. Automatically it will switch or how? Yeah, automatically it will switch. Okay, okay, Right. In Presenza only that is possible because in Presenza both the controller are on IP and both are network. And the again condition is your both the controllers should be in running condition because if your other controller is in switch off mode, then there is no point. suppose one question I have. Suppose I don't have a network over the Ethernet cable. So what is the situation there? Do we that time it will not take no? See, there is a provision in your this Presenza system, as we have checked last time, that you can create your own network also. So you will not dependent on your any third party network. So once you are having your own network, there will be a very less number of chances that your network goes down. Though in case if your network goes down, your amplifier have a capacity that by standby you can have some make announcement by yourself because the speakers are connected hardcore to your amplifier. There is nothing to do with the network, but there is a secondary option. But primary thing that if you want redundancy of your controller, the network also should be running with the both controller, whether your own controller or whether third party controller you are having, or whether both controller also should be in running condition only. Right. Are we clear on this controller redundancy and amplifier redundancy part? Yes, yes. Okay. Then 17 number, this total number of audio input to be connected to the system. You can also check that whether what kind of input they want to connect with the system. They want to use a DVD player, they want to use pen drive, they want to use Bluetooth, they want to use a computer. So according to the number of inputs which they want to utilize, we can suggest a system. In our controller, Paviro or Plena, we have given option of 4 mic line input. 4 microphone or line input you can have. If there is a scenario that more than they want, we can check the same with our system what can be done, or we can give any third party option like mixer and other thing. So they can use that. Okay. Then last but not the least, that any third party integration is required with PS system or not. So here we have given a multiple option like access control, fire alarm system, IP, CCTV, EPBX, central control system. So what happened that these all systems will give you a potential contact output. Once you trigger any potential contact output, that certain messages should play in certain zones or certain event should occur in your controller, that all you can program through your controller only. Again, this can be done with Paviro and Presenza controller only mainly, because in Plena there is option of fire integration, but you cannot do much level programming. You can do only basic integration part only. So whether when you want to use
or when you want to integrate this access control, fire alarm system, CCTV, EPBX, center control system, you can ask, and accordingly you can suggest the system. There is also option given that if you wanted to make announcement through your EPBX or SIP-based EPBX zone-wise, then you will need a programming detail and you will need additional hardware of Bosch, which we can suggest at that time. So you can check that whether they want to use EPBX integration also, then we can suggest our this Presidio PRS1 AIP to use for that one. Right. Are we clear by this point? Yes, yes. Okay, right. So one minute. Huh? Your next point is price structure, percentage structure, suggestion on the value of overall project. So, as of now, currently, I mean, from market point of view, what are the challenges you are getting in terms of pricing? See, pricing, we are facing majorly the pricing issue because I don't know whether, see, many in public address systems is a very old system from 1958, some from years it is started, and there are more players into that announcement and public address system. For example, in a lower segment like Ahuja, then many companies are there. Majorly we know Ahuja only because of the speaker, all those things. But when come to the Bosch, From you know, from that many companies, any one or two you can tell, except Ahuja. Ahuja, apart from that, Ahuja, um, I think Ravel has come up recently. Okay, Ravel PS system has come up. Uh, Apart from that, no, we remember only Ahuja. Ahuja, that is the Okay, reason we yes, want yes. your input, who all are there in the market, and the distributor few we know, like e-building. So we can Then we can we can take example one by one. Let us take a fair example that what price competition against what model you are having since last 3 months. Within last 3 months, if you have lost any order due to price, or if you have lost order anything related to freight cost or any other reason, we can discuss that. So Sanjeev but ji, I will Ranju, will Lansi. need input from your side that you have lost certain order due to certain price, and that so and so party have received so and so price and they have done billing so and so. We need that detail so we can check there. Sanjeev ji, Lansi, Ranju, you can speak. नहीं, ओके, प्राइस वगैरह पे तो बात तो हो ही जाती है, बट नाउ एट द मोमेंट हमारी थोड़ी बहुत अवेलेबिलिटी का इशू है ना, वो थोड़ा थोड़ा आ रहा है. ठीक है. कल सारा मटेरियल दे दिया मैडम. अब तो नहीं. मेरे हाथ में माल है, मैंने सारा माल दे दिया है, अब तो मैं सबके पीछे पड़ूंगा. अब बताओ क्या है. नहीं. प्राइस की अगर बात कर रहे हैं तो एक बार आप मुझे कोई भी बताइए. Sanjeev ji, please speak. You will have more query.
You are always coming for the pricing, all those things. So what is your suggestion on that? Hello, Uh-huh. are you able to hear me? Yes, yes. See, normally, see, pricing is always there. Pricing का नहीं इससे ज़्यादा, like Lindsay madam said, we were having issues with availability. That is okay, that we can speak. See, now current topic is price percentage. For example, you are telling, you are coming every time to us and asking that give some good discount. Good discount का मतलब क्या है? What is the question? I'm asking the question. You need to answer. What is the percentage? For example, 5% we are giving, even though we are customer is not satisfied. How much percent maximum you are expecting? Then we can close your. Do you think that you can close? You can blindly, you can close, go and close without any or this thing that we required, because you are front ending people, no, because I will not come to know. Whenever I am coming with you, then only I'll come to know. Moreover, you are going to the field and you are doing the face to face meeting, so you will have a input. ADI is giving this much, this scheme, that scheme, all those things. Or you tell to us if you can sell 100606 LBD, or we need to give some 5%, 5 numbers of free, or 10 number free, something like that. Any scheme you want, anything that you need to speak. The only the price part say that availability we can discuss Hello. secondary. Hi, Nitiraj. So I think you may have received the device, right? Okay, मैडम okay. माइक म्यूट So करना are भूल you गए. keeping it or do you want to return it? Yes, अच्छा, I want to okay, return okay. it. No, ठीक है, no problem. अच्छा, one thing, one little help from me required from your end is Yancy, ask. चलो मैंने म्यूट कर दिया. चलो बोलो. संजीव जी हाँ, मेरा, see what is my thing. No, it is a clear conversation. आज, so today you are listening half, then tomorrow you are again coming no, and asking, no, you know. definitely this is a price conscious market where actually we are working. But still, संजीव जी. what I would suggest is, see, it will not be, we cannot generalize like that. Based on project to project, actually, we can discuss at the time of closure and then try to close it. That would be, uh, संजीव जी, किशोर जी का कहने का मतलब है आज आपके पास प्राइस के लिए बोलने का चांस है. जो भी है दिल में बोल दो, फिर बार बार किशोर जी के पास मत जाना. Like Sanjeev ji, why I am ah, asking you? See, why I am asking you? Normally we have said 3%, 5% like that. If you think that more than that, if we are giving, can you able to close? At least you can take a call that so and so percentage I can go and take the order yeah, straight away. You definitely, you will definitely. also have some liberty. No, you can assure that you can close this deal by giving this much percentage. Do you It is. have any percentage in mind? See, actually, yeah, that is a very good this thing that you have come up with. Actually, we'll be very glad to have more margin to play with. Actually, during negotiations, okay, instead of every time to call back and depend on you and Hardik ji. It would be better if we can have more margin in our hands to close it, like around if it is around 10% or something like that instead of 5%. That's what I felt most of the times. संजीव जी तो सीधा 5% से 10% पे ही पहुंच गए हैं. वो बोले मांगना है तो सीधा बड़ा ही मांगो, छोटा बड़ा क्या मांग देगा. संजीव Maybe जी, that should be sufficient because see, we need to because talk. See. Let me say, uh, Yes, bhai. the more हाँ market. बोलिए भाई. Hello. बढ़िया. See that order, no, 16 speaker he has procured it from Bangalore partner. He got it. He got it. Maybe I don't know where he has registered. रंजू को मालूम है, मगर हमने बोला था किसी के पास नहीं है. He bought it actually. किशोर हाँ जी, आप हाँ हमसे बात हाँ कर रहे हो? हाँ हाँ. मैं भी किशोर जी पूछा को था करो सिलिकॉन. म्यूट. संजीव जी आप बोलो. and this I'm only indicating that it would be better if we have
a little bit more margin to play with. Sanjeev ji, लेकिन what problem you are facing in current pricing? That's the thing that we were talking that अभी आपको जो प्राइस दिया है वो प्राइस के सामने आपको मार्केट में क्या चैलेंज आ रही है, तो आप मुझे ये बताओ कि हार्दिक भाई एडीआई का स्पीकर 590 में मिल रहा है, मैं 650 में बेच रहा हूँ, बोलो मैं कैसे कैसे बेचूं? नो, वो तो मैंने आपको 2-3 बार शेयर भी किया था व्हाट्सएप में। अभी की बात करें लास्ट 3 महीने की, संजीव जी, लास्ट 3 महीने की हम बात करें अभी। लास्ट 3 महीने की ही बात कर रहा हूँ। आप मुझे एक बार एग्जांपल बताइए, अभी हम बात एक करते सेकंड में अभी करते मैं ओपन कर रहा हूँ, वो थोड़ा ओपन करके मैं आपको बताऊंगा। अच्छा हार्दिक जी, हाँ मैम बोलिए। देखिए यूजुअली मेरा तो चलो कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाता है, बट यस एक होगा आपका इनपुट ये चाहिए कि जहां पे 3% 5% कहाँ करना है सामने से। हाँ अगर प्राइस आता है वो तो चलिए ठीक है, उसमें से हम जहाँ पे ऑर्डर जा रहा है वहां पे करना है डेफिनेटली, मगर फिर भी कुछ लोग बोलते हैं ना कि यार आप मुझे बेटर प्राइस दो, तो देखो मैं समझती हूँ कि बेटर प्राइस का मतलब क्या होता है, हम देखो अगर आप बोलोगे ना कि मैं आपको एकदम लेमन लैंग्वेज का एग्जांपल दूं ना, अगर हम सब्जी वाले के पास भी जाते हैं ना, हम सब्जी लेते हैं ना, प्राइसिंग का एक्चुअल हमें आइडिया नहीं होता है, हम ऐसे ही ब्लंटली यस बोल देते हैं कि यस भाई टमाटर तो 20 रुपए का मिल रहा है, तो 30 रुपए क्यों लेता है? फिर वो बोलता है क्या बात कर रहे हो, मजाक कर रहे हो साहब, आज तो मार्केट का प्राइस देख लो 30 रुपए चल रहा है, इसलिए आज मैं 30 रुपए में बेच रहा हूँ। फिर आप बोलोगे ठीक है 30 रुपए में ले ले। फिर दूसरा आप ऐसा करते हो कि ऑनलाइन जाते हो, आप बिग बास्केट से ऑनलाइन टमाटर 20 रुपए का मिल रहा है, वो उसको आप दिखाते हो, उसको बोलते हो कि देख मेरे को ये 20 रुपए में मिल रहा है। एग्जैक्टली देन वो एग्जैक्टली आपको बोलेगा कि हाँ ठीक है चलो आप मेरे से 25 रुपए में या 20 रुपए में ले लो। सो यहाँ पे भी वही चीज रहती है कि वी कैन मतलब नॉट कंपैरिजन ब्लंटली करने के लिए फॉलो। है। हाँ, so we have some proof and we have some input that genuinely so and so person is getting from so and so price. Of course, we can cross check with internal that whether this actually is possible or not. See, यस if I told you that as I know, we are getting maximum competition in Delhi market and in Mumbai market. Though, though we are getting a competition, we are getting a good number of business from Delhi market and Mumbai market. If you ओके see your billing details, sometimes you can see the other distributor name also through which we are selling material to them. Like example, Gromex, Ambika, MRH. You can see those name in your these billing detail whenever it comes. So ओके we are already doing business with them. We are already billing material with them by keeping a good number of margin. Now, ओके if any layman person can understand this, that if I able to sell my product to distributor level person with the good number of margin, other normal SI or normal dealer should not have a problem with the current price which we are offering. Though ओके what we have given or what we have done is we have given a freedom to any salesperson, they can go up to discount of 3% and additional discount of 2%. They can cross check with their regional manager whether Kishorji is there also. They can also cross check with me. But again, the only legitimate reason should be there because see, ये मार्जिन रहता है तो हम सबका सैलरी निकलता है। अगर हम प्राइस तोड़ के ही सब कुछ बेचने लगे, फ्री में ही सब कुछ देने लगे, देन देयर इज नो पॉइंट। सो हम ऐसा नहीं है कि हमें बहुत ज्यादा मार्जिन रख के कर लेना है और बहुत ज्यादा तोड़ लेना है। We are keeping a very thin margin in product range because I have observed other distributor, because I have database with me also that other distributors are at what price they are getting the material. So I know when and how market is moving, and according to that only I have setted my pricing. And in that also I have given freedom to any salesperson, then they can go up to that level. And you can also have that feeling, or you can also know that the pricing which we are offering is legitimate and it's a good price for
South region market. For Hyderabad, if we take example, or for Bangalore, if we take example. संजीव जी आप कुछ कह रहे थे, बताइए. नहीं मे बी यही बोलना चाहता हूँ. वर्स्ट केस सिनेरियो, if I'm trying to reach Kishore is not available, and if I'm trying to reach you are not available, and it will project is on the verge of closure, then in that case अप्रूवल लेके ये सब करने में टाइम लग जाता है. तो इन दैट सिनेरियो we should have something to play with. That's what I'm trying to convey. That's it. संजीव जी 1.5 महीने तक तो हमारा एक ऑर्डर क्लोज होता नहीं, और एक दिन में आप हमसे रीच नहीं कर पाओगे तो ऑर्डर क्लोज हो जाएगा आपका. क्यों नहीं हुआ है? एक्चुअली क्लोज हुआ है, हमको नहीं मिला है. मैं कौन सा? बता सकता हूँ, एक सेकंड अभी बताऊंगा आपको. अप्रैल में एक ऑर्डर क्लोज हुआ, हमको नहीं मिला 140 नंबर्स का, LBD 0606 का, ड्यू टू वी वर नॉट एबल टू गिव द प्राइसिंग ऑन टाइम. GTT कैम्सिस बोल के मैं आपको व्हाट्सएप मैसेज भी डाला था उसका. आपने क्या प्राइस दिया था उनको? 650 दिया था. 650 दिया था, और उन्होंने कितने में लिया था? उन्होंने उसको 630 में मिल गया. संजीव जी तो ये तो बहुत सिंपल सी बात है ना. इतना कॉल तो आप आपकी ओर से भी एज ए लेमन पर्सन ले सकते हो. आप ऐसा बोलोगे आपने 630 में ऑर्डर उठा लिया तो मैं आपको आके मार डालूंगा, ऐसा करूंगा क्या? 20 रुपए का डिफरेंस है, वो तो एक सिंपल सा कोई भी अपना इनसाइड वाला बंदा है वो भी समझ के कर सकता है. नहीं वही तो बोल रहा हूँ मैं, अप्रूवल लेना लेके करने के लिए बोल रहे हैं ना, इसलिए तो बोल रहा था. संजीव जी थोड़ा आपको खुलना पड़ेगा, थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा. अगर आपको वही तो मैं पूछने के लिए आप कोशिश एक बार कर रहा हूँ, करके आ कितना जाओ. तक कर सकते हैं. आप एक बार लेके आ जाओ, फिर मैं मना करने वाला हूँ आपको. संजीव जी क्या बात कर रहे हो? हम एक जेन्युइन रीजन हम ढूंढते हैं, जेन्युइन चीज हम समझते हैं कि अच्छा संजीव जी आपने 630 में दिया, ओके कोई बात नहीं. सामने उनको सही में 630 में मिल रहा था, ठीक है चलो कोई बात नहीं, इस बार दे दिया, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम ध्यान रखेंगे. ज्यादा से ज्यादा तो हम क्या करेंगे? That's what हार्दिक जी, that's what I am trying to ask you. अभी आपको पता चल गया ना? कितना तक? हाँ अभी क्लियर है? क्लियर है अभी, ठीक है. ठीक है, ओके. किशोर जी, प्राइस का और किसी को कोई कंसर्न हो तो बताइए. मैं फिर मेरा डिस्काउंट स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ. Ranju, Glency. One question I have. Yes, Ranju ji. See, as you mentioned, 3% I can give from my level, right? Correct. Hello. हाँ, And up 3% to you can give from your level. what amount means the say my level up to wow, then additional 3% I can take from Kishorji, right? Up to Correct. what amount? That is some price, net amount. How See, much? for Something we ordered. any small order, if you are losing, the basic bottom line Yes. is we do not want to lose a single rupee order. Correct. Okay. So Okay. if you think that 10 number of speaker also order also, if you are losing, and if you do not want to lose that, you can Okay. take action, you can go ahead, you can close the order. We don't have any issue. If you go up to 5% also, we don't have any issue with that. Okay. Okay. Fine. Fine. But see, the dealer should not take advantage of that from us. That is also we need to make sure, because we Sure. are Sure. all mature, we are grown up, and we know how things works and how people take advantage of us. Sometimes what Sure. happened that if I give you a freedom that in your controller also, if you can give your 5% additional discount, you can go ahead. I tell you that if you are giving 5% additional discount, we will come to negative margin, but we are absorbing that margin by utilizing a margin in other product. Now, if you are giving only controller in 5% discount, then Mm. we might hit a loss. But you need Yes. to understand from client also, sir, you are only getting controller, why not amplifier, why not speaker, why not call station? Then we can take a call from our side. So it's Sure. mutual decision, it's a grown-up decision from all of us side, that we need to take things accordingly. We have to make sure that the dealer and SI are not getting advantage of us, and we are Sure. also keeping a healthy margin, and they are also keeping a healthy margin on their project price. Sure. Sure. So
we have discussed that we can give a discount up to 5%. The pricing we have already set it at very low level. If I give you example, in Suresh ji cases, that PV Lumens was billing at amplifier of around 29,300 rupees plus freight extra. So we are giving a very good price compared to that, and we have closed many orders with controller and amplifier also. So I am very much confident that there will be no major price challenge from South market. No, no, here no price challenge. Only this Ahuja some products. Okay. Because I had given 3% discount also. Thereafter also he lost one project, one quote. Okay. And then later I had given one Paviro solution also to one that also lost from my side. It is around You are 5 talking lakhs. about Hindustan. No, 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 Hindustan, not Hindustan. There is one Gala residency and one is Revival Tech. So immediately what you can do, you can take input from Kishorji also, and we can have a joint call, or we can try to Sure, sure, close it sure. out That we can do. jointly. That we can do. Okay. Right. Now, this Uh, in Amrita also yes. I had quoted for one some 45,000 because only that is with mixer amplifier and our EV 6.2 speakers. Okay. That also Okay. Right. last month I had quoted, but somehow they had moved up with Ahuja. This for a small area, some doctors area only, some ICU first area. Okay. Right. 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 That also there. That is the So only. Yeah. Tell me. Okay. if I give you an example of this difference between Ahuja and Bosch, uh, first and foremost, the difference is a brand. A Yes. reputed brand. Bosch being a German brand, they have certain overheads and they have certain product quality which they have to consider accordingly. Their pricing have been set. Yes, sir. So I agree, and I can say that we cannot even stand with Ahuja if it is against our competition. But we can make client understand that if they are going for a good brand or good quality music, they can spend certain amount. If they are interested in that, we can propose our solution. If they are also going for this Ahuja only, then we can't do anything in that. Sure. So it is obviously their call that they want to go for that, but we can do our best only. We cannot change OEM pricing for that, but whatever best we can do from our side, we can do that on that time. Uh, Also, the redundancy part, or there are many other features which we are having with our system in Paviro controller, and we have discussed that the power consumption in our system is very less compared to other brand, and the audio quality is also very good compared to this Ahuja. So that you can state those facts, or you can suggest model number, nearby model number we can suggest with the base price, and rest of the things we can leave to your end user or SI. They can decide by themselves. More than that, we can't do anything from our side. Okay. Understood. Understood. Right. The price percentage structure suggestion we have done. Now the next is, what are the parameter observation in BOQ? So, can someone tell me that whatever first time BOQ, if you are receiving, what observation is yours? Like, let's say example of Renjuji. Renjuji, today you have sent one mail, this mail, right? Yes. Yes. So, can anyone tell me by seeing this BOQ, what you understood, whether Sanjeevji, Glency Mem or Renjuji, anyone? Have you tried to go through this BOQ, Renjuji? Yes. 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 Have you tried to understand the requirement and the section wise area which they have proposing? Uh, I mean,
what you understood. If you want to tell me about this requirement, what you can tell me? Can you just elaborate this requirement to me in one or two line? Yes, yes, yes. I can. Yes. Yes. Okay. This one meant for some hotel, something. Okay. Hotel area, and they want not Reina solution. It is some Paviro because the amplifier and all is on 500 watts and above. They are asking. Okay. And there's a paging system and all things, and they are asking. Basically, they want a detailed solution. That is what I understood in that one. Kishorji, what are your observations? See, my observation, it is like, I think we need to give digital only, not analog. So, like Pavira, we can give it is for large application, I believe. Like they have, as you discussed, 500 watts supply mixing amplifier they had asked, and 2 channel output. These are 2 channel we need to suggest. And as we discussed, because 2 channel means they had asked for multiple, like multiple, zone, this one. What is that? Speakering solutions. And apart Okay. from that, it's a large application by seeing this one. And they had asked, you told no, if they wanted to plug something, we need to suggest different one. Independent level control, USB drive, and SD card, MP3, all those things, built-in FM tuner, present नहीं, memories. हार्दिक ग्लेंसी जी मैम, आप क्या आपका पूछ रहे हैं ऑब्जर्वेशन इसमें? क्या है? हाँ, ऑब्जर्वेशन क्या है? ये बीओक्यू को देख के क्या समझ में आ रहा है? ये BOQ के देख के समझ में आ रहा है, नहीं 6 नहीं, वाट का ग्लेंसी मैम, स्पीकर। ग्लेंसी मैम का ऑब्जर्वेशन क्या है, ऐसा मैं पूछ रहा हूँ सर। देखिए, पहले वाले में जो सेक्शन 1 है, मतलब वो तो अगर मतलब ये एक ही रिक्वायरमेंट है या अलग-अलग? किस हिसाब से पूछ रहे हो मुझसे? सब एक मैं साथ वही कंसिडर? समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अच्छा, मुझे ओके, नहीं ठीक। पता है। मुझे मुझे ठीक है। आई हैव रिसीव्ड दिस फ्रॉम रेंजू जी एंड आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड what is it, what it is, and what are your observations, so we can one by one can address something. Okay, so it seems like if I have to consider, this is one BOQ and there are 5 sections. So, नहीं ये section 7 है. Okay, ठीक है. Okay, ठीक है. 7 sections हैं और इन्होंने हर जगह अलग-अलग मिक्सर एम्पलीफायर भी मांगा है. ठीक है। Okay, and almost everywhere the okay, according to the usage, of course, section wise उनके mixer amplifiers भी अलग-अलग rated जा रहे हैं. राइट। ठीक है, तो एक में जो 6.5 इंचेस वाले हैं, डुअल कोन वाले, तो मोस्ट प्रोबेबली हम अपने या तो सीलिंग स्पीकर्स दे सकते हैं, नहीं तो पीसीएस 6.2 दे सकते हैं ना करेक्ट, उसमें. दे सकते हैं। और यस, फिर दे 12 सकते हैं। वॉट लाउड स्पीकर है तो 3903 जाएगा. करेक्ट। और मिक्सर एम्पलीफायर तो चलिए 500 वॉट तो अपने पास है नहीं, तो राइट। हम ऐसे दे सकते हैं कि हाईएस्ट रेटेड 240 वॉट मिक्सर एम्पलीफायर, देन आवर एंड देन वी कैन गिव, क्योंकि इन्होंने 2 चैनल मांगा है. ओके, देन वी विल हैव टू गिव 2 एम्पलीफायर्स. ओके, ठीक है। नहीं 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 नहीं, सॉरी 2 चैनल आउटपुट मांगा है और 7 माइक्रोफोन 2 ऑक्सिलरी इनपुट मांगा है, तो 2 एम्पलीफायर्स जाने ही पड़ेंगे ना. और फिर एक मतलब फिर उसके हिसाब से एक पावर एम्पलीफायर भी जा सकता है नहीं तो, और पेजिंग माइक्रोफोन. और टू मेक इट मच मोर इजियर उन्होंने माइक्रोफोन एक ही जगह पे, बाकी 2 सेक्शंस में भी माइक्रोफोन मांगे हैं क्या उन्होंने? नहीं तो फिर हम जोन वाइज भी दे सकते हैं अगर इफ दे वांट जोनिंग आल्सो. ओके, ठीक है। राउटर दे सकता है, राउटर, बिकॉज 1 controller plus 1 router, it will be done, no?
ठीक है, ओके। खैर इन्होंने जोनिंग का पूछा नहीं है। ऑलमोस्ट बाकी सारी जगहों पे उन्होंने मिक्सर एम्पलीफायर वगैरह बहुत ही नॉर्मल सा रिक्वायरमेंट मांगा है। सेक्शन 7 में शायद थोड़े अलग हैं। ठीक है। 8 इंचेस में हम वो अपने ईवी के स्पीकर्स दे सकते हैं ना 8 इंचेस में? यस, हम दे सकते हैं। 2 ठीक वे है। फुल रेंज। मैं आप थोड़ा सा मैं इसके अंदर और वो करता हूँ। पहले तो हम एक चीज समझ रहे हैं कि ये एक सिंगल होटल का बीओक्यू है। जो सिंगल होटल के बीओक्यू में उनके अलग अलग एरिया है। उनका एक कॉमन एरिया है, उनका एक स्पेशलिटी रेस्टोरेंट है, उनका एक बार है, फिर बार भी एक अलग ग्राउंड फ्लोर है, रेस्टोरेंट है उनका, और बैंक्वेट एरिया है। ये इतना हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। नाउ हमें दो चीजें चेक करनी है। रंजू जी, वी नीड टू चेक टू थिंग्स फ्रॉम योर क्लाइंट। फर्स्ट, whether they want to consider a single system for this all requirement, because see, in hotel scenario what happens, that if you are playing some music in your restaurant or in your bar area or in your banquet area, sometimes they want that any emergency happen or any evacuation happen, that existing whatever music we are playing in your bar area or restaurant area, that should automatically override, and your primary announcement or evacuation message should go across to your all area. So if we need to give similar kind of system, we have to give a two different system. First of all, I can say that there are 7 sections, so there will be a 7 But different zone. 10 sections are there. Oh, there are more sections also are there. 8 sections, 9 sections, conference room, public address conference room, third floor. Okay. So there are 10 sections are there, correct? Yes. So for 10 sections, they have asked a independent system, and that 10 section system also should connected to your main system. So the first one is we can give this our 12 zone Paviro controller in this your public address common area system. Then accordingly speaker and microphone also we can give this in your section 1 area. Section 2 area, we can give this PCS 6.2 speaker and 30-watt mixer amplifier. For section 3 area, again PCS 6.2 we can give, and this 30-watt mixer amplifier. Or we can check, because the 5 number of speaker are there, and 6 wattage and 15 wattage also they have suggested. And the amplifier inputs are also 30 watts. So better we can give them a 6-watt speaker and 30-watt mixer amplifier, because rather than what happened that your amplifier load will be lesser than your speaker load. So are we clear on this part? The amplifier which we are giving 30 watts, so therefore we are giving 6-watt speaker option in this specialty restaurant and bar first floor and bar ground floor. Or do you need to check with them? Okay, that will check. Or either we can check with them, because I can see that if there is a bar area and they would want a good quality sound of music, then Yes. definitely we can go with PCS 6.2 30-watt speaker only. If I give you this PCS 6.2 30-watt speaker, then the total load of his speaker is going to be 150 watt. And for 150 watt load, I have to give this 240 watt mixer amplifier instead of 30 watt. Okay. So what you will do here, you will give this PCS 6.2 speaker and 240 watt mixer amplifier. Again also PCS 6.2 and 240 watt mixer amplifier. Again that same goes to section 1, 2, 3, 4, 5 all together. नहीं मगर हार्दिक जी सेक्शन 3 जो है ना उन्होंने 4 माइक लाइन इनपुट मांगा है। हाँ, अपने 240 में मिलेगा ना, 4 माइक लाइन इनपुट है। अगर मिक्सर एम्पलीफायर होगा तो फिर नहीं मिलेगा ना, इसलिए मैं नहीं, मिक्सर एम्पलीफायर ही है अपना 240 वाट का। आप देखोगे, देखो मैं आपको उसका डिस्क्रिप्शन दिखाता हूँ। और दूसरी चीज की जो ये खाली फाइल है ना, वो मैंने शेयर की हुई है मेरे ट्रेनिंग फोल्डर में।
तो आप कभी भी यहाँ पे जाके कोई भी मिक्सर या उसके डिटेल स्पेसिफिकेशन देखना है तो देख सकते हो। जैसे 240 वोल्ट मिक्सर है, उसके अंदर आप जाओगे तो आपको दिखेगा 4 माइक्रोफोन लाइन इनपुट है। Okay, okay. They are asking built-in FM tuner with the preset memories. Built-in FM tuner we don't have. We have this 4 microphone line input, Bluetooth and pen drive. And nowadays, I don't think so that they would want this FM tuner with preset. If they want FM tuner with preset, we can check with them because we are not giving that option. Or whenever we are giving our quotation, we can separately give this our specification that against your BOQ, we are giving this our specification. Okay. So then they will be clear. So this section is clear. 1, 2, 3, 4, 5, 6. For 7th section, electro voice speaker you can give, which we Mukesh Bhai can suggest because it's a 150 watt speaker. Then here this they have asked 8-channel digital mixer. So we have Plena Matrix. We can suggest that one. So the BOQ we will suggest you, but the basic concept is that 8-channel mixer is there. The stereo amplifier and speaker of Pro Sound we have to give electro voice. So this section 6 is given by Mukesh Bhai and we will give electro voice over here. Section 6. So, right? For 6. section 7 also similar, we will give this digital mixer option only and with electro voice. Okay. मगर ये 150 watt वाला फिर हाँ वो भी electro voice का ही जाएगा ना। कौन सा मॉडल जाएगा? नहीं अपना ये वाला टू वे 8 inches टू वे फुल रेंज स्पीकर 150 watt हाँ we can give in electro voice. कौन सा मॉडल होगा? वो मुकेश भाई सजेस्ट कर पाएंगे, बट मैं जहां तक समझ रहा हूँ वहां तक अपना इलेक्ट्रो वॉइस का 8.2 या 5.2x कोई भी जा सकता है। ये 8 इंच का जो आता है ना टू वे कॉम्पैक्ट स्पीकर, ये हम दे सकते हैं। ये 360 वॉट का है और 90 वॉट कंटिन्यूस है। सो दिस आल्सो वी कैन अच्छा, गिव। व्हाट डज दैट मीन 90 watt कंटीन्यूअस? यानी मतलब अच्छा जो ओके कंटीन्यूअस ओके पावर ओके हैंडलिंग पीक में कंटिन्यूस 90 हाँ वॉट मिलेगा, 360 वॉट पीक रहेगा। मतलब मैक्सिमम वो वहां तक एक टोन अगर ऐसी कोई आती है तो आप जा सकता है। तो फिर मगर एक होगा ना कि मतलब इतनी देर तक की ही 360 में पीक में वो जाएगा, इतना होगा ना तो मतलब। देखो मैं आपको उससे भी अगर लेमन लैंग्वेज में जाऊँ ना तो हम एक बेसिक समझ लें कि ये बैंक्वेट का सेकंड फ्लोर का हॉल है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने 4 स्पीकर लिए हैं 8 इंच के और 2 स्पीकर लिए हैं प्रोफेशनल, ठीक है। टोटल उनकी सिस्टम बनती है 6 स्पीकर की। अभी कोई भी बैंक्वेट के अंदर ये 6 स्पीकर 150 वॉट के हैं तो वो पावर आउटपुट काफी अच्छा देते हैं। तो ऐसा तब नहीं होगा कि कोई भी बंदा आके फुल वॉल्यूम पे पूरा एक्सट्रीम लेवल पे जाके बजाएगा। सो दैट विल बी अ वेरी लीस्ट कंसर्न फॉर अस। हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हम 8 इंच का स्पीकर दे रहे हैं और हम सामने हमारे स्पेसिफिकेशन ये कॉपी पेस्ट करके डाल के दे रहे हैं कि भाई हम ये सिस्टम आपको सजेस्ट कर रहे हैं। देन वी नीड टू डिसाइड देम दैट भाई हमने ये दिया है, अभी आप बताओ आपको क्या करना है। क्योंकि see what we can do is we can give whatever things we are having in our basket. Now at some point if the things are not matching or some deviation are there, they need to take a call whether they want to go with that or not. Okay. ठीक है, तो सेक्शन 6 और 7 में अपना इलेक्ट्रो वॉइस जाएगा। सेक्शन 8 के अंदर कॉन्फ्रेंस रूम है, तो यहाँ पे अगेन अपना बेसिक कॉन्फ्रेंस रूम का जो सेटअप है अपना बेसिक, जैसे इन्होंने 40 वॉट के स्पीकर मांगे तो हम 30 वॉट के स्पीकर दे देंगे, 240 का मिक्सर दे देंगे, वायरलेस माइक दे देंगे, इलेक्ट्रो वॉइस के गूजनेक माइक दे देंगे। इस हिसाब से ये हो जाएगा। सेक्शन 10 में भी सेम चीज है, बेसिक उन्होंने स्पीकर और वो मांगे हैं तो वो हम सजेस्ट करेंगे। सेक्शन 9 और 10 में दोनों में सेम है, कॉन्फ्रेंस सिस्टम का ही है। तो इस हिसाब से हम एक पूरा बीओक्यू देंगे। तो और एक पूरा क्या जाएगा, पवीरो जाएगा यहाँ पे, बेसिक पब्लिक एड्रेस सिस्टम कॉमन एरिया के लिए, जो हम उनको बताएंगे। वी नीड टू टेल देम दैट दिस पवीरो सिस्टम विल कनेक्टेड टू योर ऑल अदर सब एप्लीकेशन। So in that way, in case if they want to do overriding system at any time, they can do that.
Okay. देन अदर जो भी सेक्शन है उनके उनके हम सब BOQ उनको शेयर करेंगे. Okay. So what you can do is, Renju ji, first of all, we will have a separate call with you to discuss for that BOQ, and you can also access this file from my training module that all the detailed specification are mentioned. And I would suggest whenever you give any quotation, you just do copy paste this detailed specification against any BOQ. So you can say later that, boss, I have already suggested that these I am suggesting according to our specification, so that Okay. later on nobody will blame us that we have asked you with the FM tuner and you have not suggested. You can tell them that we have already told you that we are not suggesting that thing. Okay. Okay. So this BOQ, I think, understood by all. Yes. Yes, yes. Then one more BOQ we will take. Sanjeev ji. PSR Tech Park, PAS Hyderabad, VK Building, Hyderabad, Microsoft Project Hyderabad. Okay. Sanjeev ji, This is IP based system, Hardik ji. this is IP-based system. Wow. So we can discuss on IP-based solution. Microsoft. Microsoft. Okay. So by this first line, what you can understand from your requirement, what is the basic parameter it is needed, which is function to be performed? We have to give networkable controller. They're asking for IP based networkable controller. Okay. Then And it will be one will be acting as a master and the other one is slave. So redundancy, they are asking for redundancy here. okay. So you see this line for Yeah. simultaneous messaging individual floor announcement they want. Yes, yes, So we have discussed this channel part, right? That yes. if more than two channels Multi-channel. are there, we can suggest only one solution with us. What solution we are having with us? Presence. Presenza, right? Exactly. So for this IP-based digital voice alarm controller, we have this Presenza controller only. So what we will do is a controller we will give and specification we will give. So by doing this, we will mention our this model number and specification also we will mention. So nobody can blame us later on that we are asking this feature and you are asking this. You have given all the detail that, boss, these are the feature I am giving to you. Yes. These includes all multiple channel, IP, network-based controller, emergency compliant, voice system, and everything. Correct. Right? So according to that only, the other component of system you can suggest. The slave controller, the same slave controller also will remain same. Yeah. An announcement console, which means a call station. So the call station is also there. So call station you can suggest there. An audio source, then will be a third party because we don't have any audio source with us. Okay. Amplifier, they have asked 300 watt class B amplifier. So we have 600 watt only. So what you can do, you can reduce the number of quantity amplifier by stating that we are giving 600 watt amplifier instead of 300 watts. We are giving 3 quantity. Correct. Right? Then 19U rack, we are not giving ceiling speaker. We can give ceiling speaker. What model you want to give? 0606 LBD. 0606 you want to give. You want to check their specification if they have mentioned some specific thing. Yeah. They have mentioned very common thing only. So we can give 0606. No issue. LBD 0606. See, in your 0606 also, you are mentioning all the detail, including specification, wattage, frequency range, and everything.
So you Yes. can say that I have given my specification and my detail. According to that, you have given model. Then again, supply and commissioning of 6-watt ceiling speaker. Again, same thing is happened. But here they are Speaker asking for should have surface mounted, because here surface we need to mounted. consider the So box, a back box we need to yeah, consider. back box we need to consider. 8356. 8356. वाह, संजय जी को तो आता है. LBD 8356. एंड वॉल माउंटेड स्पीकर कितने वॉट के है? वॉल माउंटेड स्पीकर 6 वॉट के है. कौन सा 3902. मॉडल देंगे अपने? 3902. LBD2. किशोर जी खामा खा कहते हैं कि मेरी टीम को बीओक्यू डिजाइन करना नहीं आता है. तो आता है संजीव जी को. जंक्शन Junction बॉक्स box. हम नहीं देंगे क्योंकि वो हमारे में आता नहीं है. जंक्शन बॉक्स हम वॉल माउंट स्पीकर भी हम नहीं देंगे, तो हमारे में आता नहीं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे थर्ड पार्टी. और ये आपका बीओक्यू कंप्लीट हो गया. इजी है, कोई डिफिकल्टी नहीं है. आपको अच्छा इसमें प्राइस डालना होगा नहीं? तो प्राइस आप यहाँ पे लिख दो कंट्रोलर का 7,80,000. सेम, ये भी सेम रहेगा. नीचे ऑल और स्टेशन का प्राइस क्या है? दोनों का टोटल डालना होगा 325. एम्पलीफायर का आप डालोगे 869. बाकी का प्राइस तो आपको प्राइस लिस्ट में से मिल जाएगा. हाँ, वो मिल जाएगा, वो दिक्कत नहीं है. लो, तो ये आपका बीओक्यू बन वो गया. शेयर और कर दीजिए ना हार्दिक जी. हाँ जी, वो मैं शेयर कर देता हूँ आपको. देखा, आपका काम भी हो गया उसी बहाने. ठीक है, तो ये बीओक्यू आपको पता चल गया है. क्लेंसी मैडम, आपका कोई बीओक्यू हो तो वो बता दो, हम वो भी चेक कर लेते हैं. आप तो वैसे बना ही ले. हार्दिक जी, मेरा और एक है, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है मुझे. कौन सा? और इसके बाद और एक भेजा था मैं आज. ये कल. एक आपने बीएसआर टेक पार्क का भेजा है और एक नहीं ये नहीं, कोर्स उसके भेजा बाद है. में ये उसके ऊपर वाला देखिए थोड़ा. माइक्रोसॉफ्ट ये कोकापेट हैदराबाद. ये तो अभी हो गया ना. नहीं, हमने लोटस ग्रैंड, हाँ लोटस ग्रैंड, सही बात है, ये वाला है, करेक्ट. हाँ. देखो, 12 जोन पीए कंसोल मांगा है, तो हम क्या देंगे? अब ये पवीरो देंगे ना. पवीरो देंगे. वाह, देखो पता चल गया. फिर बैकअप बैटरी भी उन्होंने मांगा है, तो बैटरी हम बैटरी देंगे का नहीं, वो मुझे, अलग से लेनी होगी. वो थर्ड 240 पार्टी है ना. एम्पी. बैटरी कहाँ ये का, कहाँ कैसे करेंगे? कॉम्प्लिकेटेड है, ये तो बहुत सिंपल है. नहीं, बैटरी का कैसे करेंगे उसका? थर्ड पार्टी बैटरी हम डालना है. लेते ही नहीं, हमें थर्ड पार्टी डालना है. अच्छा, तो फिर ठीक है, मैं कर दूंगा वो. मॉडल डाल देना है, डिस्क्रिप्शन डाल देना है अपना, और प्राइस डाल देनी है, और सबमिट कर देना है. नहीं, ये वाला नहीं, एक सेकंड, अभी मुझे एक. क्लेंसी मैडम, आपका कोई है? रंजू जी, आपका कोई है? मीनवाइल रंजू जी का तो देख लिया वैसे हमने. हार्दिक जी, मैं एक मेल भेजा था आपको कल रात को. कल रात को? उसमें पीए और आईपी बेस्ड सीसीटीवी सननेट से आया था, सननेट सॉल्यूशन से. आप एकदम बॉडी के अंदर सारा डाल के भेज देते हो, इंसान भी कंफ्यूज हो जाता है कि क्या करना है इसका. थोड़ा एक्सेल में डाल के भेजा करो. नहीं, एक्सेल नहीं है, बॉडी में ही है. हाँ, बॉडी में ही है सर. देखो, यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा है. एक तो 128 स्पीकर है आपके, ठीक है, हाँ. और 150 वॉट का स्पीकर है. अपना बेसिक रूल एंड रेगुलेशन है कि 50 या 60 वॉट के स्पीकर कभी भी कोई भी लोड जाए, बाय डिफॉल्ट क्या आएगा? इलेक्ट्रो वॉइस. इलेक्ट्रो वॉइस, ओके. तो यहाँ पे क्या जाएगा?
मुकेश जी को पूछना पड़ेगा ये। हाँ, फिर 4 चैनल क्लास 3 एम्पलीफायर भी 2000 वॉट का है, तो वो भी वही आएगा। फिर पेजिंग स्टेशन, कमांड कीपैड भी है और वीडियो प्रोसेसिंग एंड यूनिट भी है, ये डीएसपी है। DSP, एक ओके, EV तो पूरा। डीएसपी अलग जाएगा। हम्म, और पेजिंग माइक्रोफोन जो है ना, वो हम अपना दे सकते हैं, लेकिन थोड़ा समझना पड़ेगा। आप क्या करो, इसकी क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है रिक्वायरमेंट का? ये ऑडिटोरियम के लिए पूछ रहे हो, थोड़ा छोटा ऑडिटोरियम है। ऑडिटोरियम के लिए तो इलेक्ट्रो वॉइस ही ऑडिटोरियम जाता और है, वो तो आपको पता है। बट ऑडिटोरियम में भी आप प्रोजेक्ट का नाम तो कुछ लिखो संजय जी, प्रोजेक्ट का नाम ही नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा? ऑडिटोरियम मतलब कौन सा ऑडिटोरियम, कैसा ऑडिटोरियम, कहाँ का ऑडिटोरियम? तो मैं पता वही कर। जो हमने वो डिस्कस किया ना, आप सी हम्म, कोई भी एक्शन लेने से पहले आप एक थोड़ा बेसिक क्रॉस चेक कर लिया करो, तो यहाँ पे अपना लोड जो है कम हो जाएगा, तो थोड़ा फटाफट आपको रिप्लाई मिल जाएगा, डिजाइन होकर सॉल्यूशन आ जाएगा। हमने जो 5 आइटम सुबह डिस्कस की ना, वो समझ। एप्लीकेशन यूसेज क्या है, जोन क्या है, कॉल स्टेशन क्या है, स्पीकर का टाइप क्या है, वोल्टेज क्या है, बस वो सिर्फ आप ले लो डिटेल, तो हम इजीली अपने को बना के हम सबमिट कर सकते हैं। डन डन सर, समझ गया मैं। ठीक है ना? या, अभी व्हाट आर द पैरामीटर ऑब्जर्वेशन इज बीओक्यू। हाँ, अभी इसमें किसी को कोई क्वेरी है तो मुझे बता दो, रंजू जी, ग्लेंसी मैम, किशोर जी, आपको कुछ चैलेंज हो, कहीं पे कुछ चीज समझ में ना आ रही हो तो मेरे को बता दो, तो हम वो चीज कवर करने का भी ट्राई करते हैं। See, one more time, I want the clarification on the Renju BOQ, that hotel BOQ, no? यस, बताइए। Okay. यहाँ पर section 1, we are giving one master controller, correct? Paviro. पवीरो, Paviro we are giving, that is a master controller. Then we are giving 6 watt speaker 52 numbers. Okay. 12 वॉट Then स्पीकर, हाँ 6 वॉट स्पीकर 52 नंबर, यस ceiling करेक्ट। and cabinet loudspeaker we are giving 13. Okay. करेक्ट। Then the paging microphone, all those things, one number. Then करेक्ट। second, these also how much? 6 watt, 6 watt speaker 4 number. These It's a we zone need to wise. check. It's a zone See, wise, no? these we have discussed. I guess you are not present on that time. That we have discussed that we can check with customer or dealer. After that, we can suggest electro voice speaker. The reason is you are going to play the music in restaurant and bar area. Of course, they would want a good quality music. So with for good quality music, we can suggest electro voice speaker only, because that are the basic and cheaper speaker which can give you a good output. Okay. So that part we have discussed, and we have also discussed that instead of 30 watt speaker, 30 watt amplifier, we need to suggest 240 watt mixer amplifier. Okay. So the section 2, 3, 4 and 5, these all we are giving PCS 6.2 speaker with 240 watt mixer amplifier. For section No, 6, no, we the are giving speaker will be same. Speaker will be the same. speaker will be same. You see, the all the specifications are same only. There is no difference. We are giving only the amplifier we are changing. Amplifier Because, we are giving 240 watt, and we will also specify our specification also against that. but the price will vary, no? If we are increasing 240 watt, price is too, price vary, So it will vary, therefore, no? we have already told na that first of all we need to check dealer and then we have to suggest that one. Kishore ji, see, we are not have to sometimes blindly follow the specification. We need to understand the requirement, and then we have to suggest a good solution. Let's say example, if you have given the LC3 UM06 speaker here and 30 watt mixer amplifier, and if your customer is not getting a quality output in your restaurant area or bar area, then who will responsible for that? Correct. So Understood. we as a value added distributor, we know these things, and that's why we are suggesting that, sir, this is our suggestion, that if you go with a electro voice PCS 6.2 speaker and this 241 mixer amplifier, this will be a good solution for you according to your application. This is only our suggestion.
After that also, if your client denies and if he say that by I want only basic speaker, I will responsible for anything happen to that site. Okay sir, if you want this, we will give you that. Then we will give basic ceiling speaker of 6 watt and 30 watt mixer amplifier only. Okay. Right. So for section 2, 3, 4, 5, we'll address that way. For section 6 and 7, we will give electro voice solution. Again, for section 8, 9, 10, we will give a Bosch basic solution and with wireless microphone and amplifier. Understood. Understood. So are we clear on this BOQ Yeah, part? yeah. I have one doubt on this. Okay. Yes. Only one doubt. ऊपर जाना है क्या है? First column. मुझे नहीं जाना है ऊपर. हाँ. नहीं. वो ऊपर नहीं है, मैं इसका बोल रहा हूँ. बताइए बताइए. ये है ना, the thing is that see now I am can we suppose मैं ऐसा सोच रहा हूँ, normal in my mind it has come. So हम 30 किए है, 30 ओके 120 ठीक है. ये पूरा 30 + 30 मिक्सर एम्पलीफायर ऑल टुगेदर इट्स अ 4-5 सिस्टम. Is it possible to make single system? Suppose 240 watt का मैं दे दिया तो can we like floor wise एक ही डाल सकते हैं, एक ही जगह डाल के पूरा कनेक्शन दे सकता है? वाह क्या ख्याल आया है आपके दिमाग में. कंट्रोल कहाँ से करेंगे? नहीं, I was asking whether it's possible or not. नहीं नहीं, सी पॉसिबल तो सब है, पर उन्होंने सेक्शन तभी बनाए होंगे ना जब उनको इंडिपेंडेंट कंट्रोलिंग चाहिए होता है और इंडिपेंडेंट स्पीकर प्लेस करने होते हैं. अदरवाइज तो हाँ. उनके दिमाग में भी वो बात नहीं आती होती कि मैं इनको क्लब करके एक सिंगल डाल दूं. करेक्ट. Which I had asked is centralized, no? ऐसा कर सकता है करके एक क्वेश्चन. सी इसमें क्या है कि अपना अगेन जो प्लेना मैट्रिक सॉल्यूशन है ना वो हम दे सकते हैं, लेकिन प्लेना मैट्रिक सॉल्यूशन में अगेन वो मुश्किल हो जाएगा. मतलब ये बीओक्यू को देख के मुझे क्या लग रहा है कि वो पर्सन को लोकल म्यूजिक कंट्रोल करना है. हाँ. रेस्टोरेंट में अलग म्यूजिक बजेगा, पब्लिक एड्रेस बार में अलग म्यूजिक बजेगा, बार ग्राउंड फ्लोर में अलग म्यूजिक बजेगा, रेस्टोरेंट सेकंड फ्लोर और उसमें भी थोड़ा अलग बजेगा. मतलब वो अपने हिसाब से फ्री है कुछ भी प्ले करने के लिए. जब हम इसको सेंट्रलाइज क्लब करके देंगे ना, तो अगर उनको अलग अलग म्यूजिक अपने मर्जी के हिसाब से सुनना है ना, वो चीज नहीं हो पाएगी. करेक्ट. तो उस वजह से इंडिपेंडेंट जो म्यूजिक दिया हुआ है वही सही है, क्लब करने की जरूरत नहीं है. अंडरस्टूड. ठीक है. तो इसके अलावा अभी और कोई क्वेरी हो बीओक्यू थोड़े ऑब्जर्वेशन में अंडरस्टैंडिंग में? वो एक चीज मैं आपको बताऊं कि जहां पे भी आपको नंबर ऑफ जोन्स दिख रहे हैं, वहां पे अगर उन्होंने 8 जोन दिखे तो अपना 12 जोन दे दो, उन्होंने 6 जोन दिखे तो अपना 6 जोन दे दो, उन्होंने 4 जोन लिखे तो अपना 4 जोन दे दो. कंफ्यूज मत हो कि हमें क्या देना है. अपने पास 3 ही सिस्टम है, एक है 6 जोन, एक है 12 जोन और एक है प्रेसेंसा आईपी बेस. प्रेसेंसा आईपी बेस काफी महंगा है, तो वो बहुत रेयर जाएगा ये माइक्रोसॉफ्ट जैसे केस में. उसमें भी चांसेस आर देयर कि वो बीओक्यू पहले से लॉक और कोई काम कर रहा हो. बट यस, हमें अगर देना है और हमें क्लाइंट को एंटरटेन करना है तो हम उस हिसाब से कर सकते हैं. One more question I have, Hardik ji. Okay. Suppose if they have a 36 zone, can we give one controller plus 2 router? सी अगर 36 जोन है तो आपका 1 कंट्रोलर और 1 राउटर ही इनफ है. 1 कंट्रोलर प्लस 2 राउटर की जरूरत नहीं है. अपना No, राउटर router आता है 12 router कितना 12 जोन ही करता है ना? 24 जोन करता है. पवीरो में Okay. 24 आता है. Okay, understood. वो Sorry. किशोर जी लास्ट वाली ट्रेडिंग में थोड़े मिसिंग हो गए थे. नहीं, मैं पूछ रहा हूँ because that is optional I am asking. वो अपने लास्ट That is प्रेसेंसा available. पवीरो का लिया था तब आप नहीं थे क्या? He was नहीं there. हो गए सर. I देर शायद. आप थे, फिजिकली आप अच्छा, थे अवेलेबल. दूसरी चीज हार्दिक जी, अभी तो हम हाँ. बीओक्यू पे कर रहे हैं. हाँ अभी थोड़ा बहुत और जो नेक्स्ट लेवल होगा वो होगा कि हाँ हम किसी पार्टनर के पास जाएं और पार्टनर बोलते हैं कि आप एक बार सर्वे कर लो, तो जो सजेस्ट करना होगा वो भी आप थोड़ा बहुत हमें आइडिया आप दे दीजिए. मैं आपको उसमें बेसिक चीज बताऊं ना, कोई भी बिल्डिंग बनती है, कोई भी प्रीमाइसेस होती है, वो
कैड ड्राइंग के बगैर नहीं बनती है, ओके, मोस्ट ट्रू प्रोबेबली, ट्रू मोस्ट ऑफ द टाइम, ट्रू, मोस्ट ऑफ द टाइम। हाँ अगर हमें कैड ड्राइंग मिल जाते हैं तो हाँ, आपको साइट सर्वे की जरूरत ही नहीं है। फिर डेफिनेटली भी नॉट। अगर आपको साइट सर्वे करना पड़ रहा है तो हमें जो हमने 5 पैरामीटर आज सुबह डिस्कस किए वही ओके, ध्यान में रख के चेक करना है। जैसे मान लो अगर आप स्कूल में गए हो तो सबसे पहले आप देखोगे, अच्छा ठीक है चलो फ्लोर कितने हैं, इतने हैं, चलो क्लासरूम कितने, इतने हैं, क्लासरूम की साइज कितनी है, इतनी है, एक क्लासरूम में कितने स्पीकर आएंगे, अच्छा 2 स्पीकर आएंगे, ओके, एक ये वो क्लासरूम में 2। ओके, वो सही था। मगर अभी जैसे रंजू जी का वो जो बीओक्यू था ना, जहाँ पे वहां आया था कि टू वे स्पीकर्स विद 150 वॉट वाला, तो आपने बोला ना कि एक, आपने बोला था कि नहीं उसपे, मतलब वो हम कैसे जज करेंगे कि वो टू वे स्पीकर्स कहाँ लगने होंगे, या 150 आपने देखो बोला ना? मैं आपको बताऊं कि जहां पे भी यू नीड अ गुड क्वालिटी ऑफ साउंड म्यूजिक, जहाँ पे भी यू नीड अ गुड क्वालिटी ऑफ साउंड म्यूजिक, वहां पे मोस्ट प्रोबेबली इलेक्ट्रो वॉइस ही देना है, क्योंकि वो प्रो साउंड है। मतलब यस यस, इट्स अ प्रो, उसके हाँ साउंड में ही लिखा है कि प्रो साउंड, सो प्रो इट्स से, अ प्रो हाँ, साउंड। तो वैसी कोई भी एप्लीकेशन, जैसे चाहे कोई बैंक्वेट भी हो, रेस्टोरेंट भी हो, होम थिएटर हो, जहां पे भी दे नीड अ गुड क्वालिटी, अ लिटिल बिट गुड क्वालिटी इज आल्सो ओके, तो वहां पे हम बाय डिफॉल्ट टीवी देंगे। अपने बॉश के अंदर भी टू वे स्पीकर है, ऐसा नहीं है वी डोंट कैरी दैट पोर्टफोलियो, वी हैव दैट टू वे स्पीकर आल्सो। लाइक इफ यू से एग्जांपल दिस आवर LB2UC 15, LB2UC 30, LC1PC 30, LC1PC 15, that all are two way speaker only, but ओके, उनकी उतनी अच्छी साउंड क्वालिटी आउटपुट नहीं है कि हम बोल पाए। मतलब मैं आपको बता दूं, बॉश पे उतना भरोसा नहीं कि उतना अच्छा क्वालिटी साउंड आपको देगा कंपेयर टू इलेक्ट्रो वॉइस। इलेक्ट्रो वॉइस दे आर मोर इनटू स्पीकर मैन्युफैक्चरर ओनली एंड दे हैव एक्सपीरियंस ऑफ 110 इयर्स, सो उनका डेफिनेटली बॉश से ज्यादा अच्छा होगा, भले वो बॉश का ही अभी एक पार्ट है, बट यस इलेक्ट्रो वॉइस इज ऑलवेज अ गुड ऑप्शन। हाँ यस। तो नहीं, मैं मतलब ये जो टू वे स्पीकर का है, मतलब वो राइट एंड लेफ्ट वाली बात है क्या टू वे स्पीकर का? नहीं 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 नहीं, अच्छा तो सी टू वे का मतलब क्या होता है, आपके एक ही स्पीकर के अंदर आपको 2 ड्राइवर मिलते हैं अलग ओ, अलग। अदरवाइज ओके स्पीकर में ओके, एक ही ड्राइवर आता है जो सिर्फ आपको एक सिंगल ड्राइवर का फ्लैट म्यूजिक आउटपुट देता है। ओके, जिसमें 2 ड्राइवर आते हैं, उसमें एक ट्विटर होता है और एक वूफर होता है, तो आपको यस यस अच्छा यस सा यस, गुड क्वालिटी साउंड म्यूजिक की फीलिंग आती है। ओके ओके। ठीक है। उसमें जो आपने 150 वॉट वाला जो उसमें लिखा हुआ था ना, वो एक लाइन, हाँ उसपे आपने क्या बोला था, मेरा रह गया वो, अभी याद नहीं आ रहा, मगर आप उसी में ही बोला था कि हाँ देखो उन्होंने लिखा है हाँ, रेंज स्पीकर 150 वॉट, यस। 8 इंच का 150 वॉट का उनको स्पीकर चाहिए, ठीक है। हम्म, उन्होंने डिटेल स्पेसिफिकेशन कुछ भी नहीं दिए है कि उनको फ्रीक्वेंसी क्या चाहिए, वेदराइज है नहीं वेदराइज है, कुछ भी है नहीं है, पता नहीं है। तो अपने क्या करेंगे, सिंपली अपने पास देखेंगे कि इसका सिमिलर नियर बाई मॉडल कौन सा है। तो भाई ईविड 8.2T, तो ईविड 8.2T जो है वो 8 इंच का स्पीकर है, उसका पावर 90 वॉट है, बट उसका एसपीएल ज्यादा अच्छा है, तो वो ये रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकता है, तो हम ओके हमारे स्पेसिफिकेशन उसके अगेंस्ट में डाल के दे सकते हैं। वी ओके आर मैचिंग दिस बाय गिविंग दिस अवर मॉडल। ओके। तब जब वो रेंज स्पीकर बोल रहे हैं, इट इज रेंज इज मतलब वहां तक, वो पीक की बात नहीं कर रहे हैं ना? रेंज नहीं लिखा है, सिर्फ फुल रेंज लिखा है। ओके, फुल रेंज मतलब फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स होता है, हर एक स्पीकर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स पे वर्क करता है। तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आपको पता होगा कि अपने हर्ट्स में होता है, जैसे ये 70 हर्ट्स और 20 किलो हर्ट्स लिखा हुआ यस है। यस, तो ये और वो दोनों वर्ड सेम ही है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने फ्रीक्वेंसी बकायदा लिखी है और उन्होंने उसको बाय डिफॉल्ट फुल रेंज डाल दिया है, और कोई डिफरेंस नहीं है। ओ ओके। हाँ बट आई वाज रीडिंग कि वो फुल रेंज 150 वॉटेज पे डिपेंड है। ओके, तो फ्रीक्वेंसी रेंज का है उसका मतलब। हाँ। Yeah. और जैसे अपना 6.2 वाला है, मतलब उसमें 100 वॉट तक का है ना? अपना पीसीएस 6.2 यस यस, पीसीए 6.2 जो है अपना 6 वो इंच वाला, 30 वॉट है, 30 वॉट का 30 है। वॉट, मगर उसमें लिखा है ना 100 वॉट तक, तो इसलिए मैंने पूछा। वॉट तक नहीं है, 100 वोल्ट है, वोल्टेज है, वोल्टेज इज डिफरेंट एंड वॉट इज डिफरेंट।
वोल्टेज है वो। एक मैडम मिनट, एक मिनट, मुझे, मैं भी इलेक्ट्रो वॉइस। ये रहा स्पेसिफिकेशन इसका। वोल्ट, ओके, मुझे 100 वॉट क्यों याद आ रहा है? अभी अभी मैंने देखा, उस पे आपने देखा था, ऐसा कह रहे हो आप? नहीं नहीं, मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है, नहीं नहीं मैंने देखा नहीं। जैसे यहाँ पे तो खैर टैपिंग लिखा हुआ है 13, 15, 7.5, तो 30 वॉट तक का तो ठीक है, मगर फिर 100 वॉट वाला शायद वोल्ट होगा, वोल्ट ही होगा वॉल्ट शायद, लाइन होती है वो तो, हाँ वोल्ट होगा फिर हम। हाँ वॉल्ट होगा। देखना मैडम, संभालना थोड़ा, ऐसे ऐसे शॉकिंग मत देना। ठीक है, किशोर जी, रंजू जी, संजीव जी, आपकी अच्छा, ओर से। ओके हाँ ओके, मैडम, बोलो बोलो। अच्छा इसमें ईविड वाला था, हम ईवी, एक मिनट, वो ईविड में था 200 वॉट वाला, मैं एक बार पीसीएस वाला एक मॉडल बार, बोलो इसमें से, आप मेरे को, मैं आपको पूरा उसका जन्म कुंडली दे दूंगा। ओके। ओके, नहीं वो मैंने गलत ध्यान आ रहा होगा। ठीक है, डन है। ओके। What are the questionnaires to be asked from the partner if requirement comes, वो हमने देख लिया। तीन चीजें थोड़ा ध्यान से मांगा करो, प्रोजेक्ट नेम, प्रोजेक्ट लोकेशन एंड प्रोजेक्ट टाइमलाइन। ये तीन चीज हमें मिलेगी ना, पूरा थोड़ा चिट्ठा हमें पता चल जाएगा। ओ, ओके, अभी फिर जैसे अभी कंपटीशन ब्रांड की बात आई थी, तो जैसे यहाँ हाँ, पे रंजू जी के रिक्वायरमेंट था, वहां पे 6.5 वाले स्पीकर्स आ रहे हैं, तो वहीं पे अभी मैं जहाँ पे भी जा रही हूँ, यूजुअली मोस्ट ऑफ द प्लेसेस चाहे मॉल्स वगैरह में हो, आई एम सीइंग JBL के स्पीकर्स दिख रहे हैं। ये JBL के ही स्पेसिफिकेशन है, 8124 करके मॉडल आता है उनका। ओके, हम्म। तो उसके अगेंस्ट हम फिर क्या बोलेंगे, क्योंकि दैट्स व्हाट आई एम आल्सो फाइंडिंग, आई एम जस्ट PCS ऑब्जर्विंग। 6.2, PCS 6.2, बट उसको आपको बोलना होगा कि सर, the JBL speaker comes with 6 wattage, we are giving you a 30 watt speaker and ओके, with the little bit 20 to 20% different price। मतलब अगर आप थोड़ा पावरफुल स्पीकर दे रहे हो अच्छी क्वालिटी के साथ में, और वो भी वेरी कम दाम में, तो फिर आप ये सोच सकते हो, ले सकते हो। ओके, तो उसकी एडवर्टाइजमेंट आती है ना किसी की, तो कि कम दाम में ज्यादा सफाई, ज्यादा धुलाई, ऐसा वाला, कि हम कम प्राइस के अंदर ज्यादा वोल्टेज का स्पीकर दे रहे हैं। वो लोग 6 वोल्ट का ही दे रहे हैं, हम बोलेंगे सर 6 वोल्ट का, हम आपको 30 वोल्ट देते हैं, लो ये प्राइस में, अब बताओ क्या चाहिए। तो फिर वो अभी कोई थोड़ा जैसे टेक्निकल आया तो बोला कि यार तुम 30 वॉट तो कर रहे हो, वहां पे एम्पलीफायर्स मुझे और देने होंगे, फिर उसमें वॉटेज ज्यादा, तो एम्पलीफायर फिर आपका डिफरेंस होगा, बट उसके सामने आपको जो स्पीकर है वो वाला 30 वोल्ट का, उसमें भी आपके पास टैपिंग का ऑप्शन है। यू कैन टैप दो स्पीकर एट हाँ 15 वॉट ऑल्सो, 7.5, हाँ। 7.5 वॉट ऑल्सो। तो अगर हम्म। उनका वो कंसर्न आ रहा है, तो उससे आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो फिर वही बोलेगा कि यार तो फिर वहीं पे हो गया ना, मुझे अगर टैपिंग 7.5 पे करना ही था, तो फिर मेरा वो 30 वॉट का तो फिर कोई फायदा नहीं रहेगा। सर उसकी क्वालिटी और इलेक्ट्रो वॉइस की क्वालिटी में फर्क है, आप एक बार डेमो देख लो दोनों स्पीकर का। ओके, ओके, नहीं क्योंकि मैं इन जनरल बस ऑब्जर्व किया। हमारा रिसेंटली मुंबई के अंदर इस्कॉन टेम्पल के अंदर 132 स्पीकर का केस था, जहाँ पे JBL के स्पीकर का कोड गया हुआ था। वहां ओके, पे वी हैव गिवन इलेक्ट्रो वॉइस स्पीकर PCS 6.2 के साथ में। वो लोगों ने एक सैंपल स्पीकर मंगवाया, डेमो देखा, JBL के सामने अप्रूव किया और ऑर्डर क्लोज किया। ओके, तो ऐसे ओके। कोई केस के अंदर हम डेमो ही दिखा सकते हैं। सर रंजू जी, डेमो भेज दो ये क्लाइंट को। और और फिर ये तो चलिए JBL के अगेंस्ट हो गया, अगर बोस हो तो बोझ हो तो बोझ का प्राइस आएगा 5,500 रुपए, तो वहां पे तो हम प्राइस पे ऐसे ही जीत जाएंगे। बगैर स्पेसिफिकेशंस सेम रहेंगे। स्पेसिफिकेशन सेम रहेगा। ओके, हमारे पास चुन चुन के प्रोडक्ट भरी हुई है, कम दाम में ज्यादा बेनिफिट देने वाली। ओके। लाइक हार्दिक जी, हमारा हाँ, बॉश व्हेन कंपेयर टू हेनरिच कैसा है? हेनरिच ज्यादा कॉस्टली है और बॉश कॉस्टली है?
बॉश कॉस्टली है। हैंडीज क्या करता है, हैंडीज के ऑनर है जितेंद्र करके, हाँ नोएडा से है पर्सन। उन्होंने हाँ हैंडीज कंपनी दिखाई है कुछ जर्मनी बेस्ड, और वो लाते हैं यहाँ से, चाइना से। और उनके ओईएम है सीएमएक्स ऑडियो, और वो सीएमएक्स ऑडियो का लाके थप्पा लगा के उनका फर्मवेयर बना के बेचते हैं, जो आपके एम्स के अंदर भी उसी की सिमिलर प्रोडक्ट एविट्रॉन ने दी हुई है। दोनों के फादर एक ही है, चाइना में बैठे हुए हैं, प्रोडक्ट वहीं से आती है। थप्पा अलग अलग होता है, सिर्फ एक नहीं में तो फिर एविटॉन का थप्पा होता है, एक में हेनरिच का थप्पा होता है। नहीं तो फिर यहाँ पे मेट्रो स्टेशन में वगैरह हाइनरिक ही गया है ना। एनरिच ही है, सब जगह एनरिच ही है, मेट्रो हाँ मेट्रो वो में। वो सीपीडब्ल्यूडी। वो दो तरह की गेम होती है, एक स्पेसिफिकेशन की गेम होती है, और एक होती है अपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर आपका सेटिंग करवा के अच्छे से प्रोडक्ट बिठा के अगर करवाया है तो। आप अगर प्रोडक्ट, मैं सारी प्रोडक्ट की क्वालिटी अभी पाम एक्सपो में जब गया था मुंबई में तब मैं देख के आया था। वो एक लाल कलर का डब्बा बिठा दिया और उसके अंदर एक फिजिकल बटन दे दिया ना, ऐसा वाला लग रहा था। ना ही उनकी प्रोडक्ट कोई सेल्फ सर्टिफाइड है, ना ही कोई EN54 सर्टिफाइड है, बट वो अपने हिसाब से कुछ कुछ अप्रूवल लेके वगैरह सेटिंग करवा के वो मार्केट के अंदर कर देते हैं। बट वो इस तरह से है, जहां पे स्पेसिफाई केस है, हिंदी स्पेसिफाई है, तो वहां पे वही जाएगा, वहां पे वी कांट डू एनीथिंग एक्सेप्ट वी कैन ओनली सजेस्ट बॉश कि भाई हमारे पास ये है, हम ये सजेस्ट कर रहे हैं। ओके। यस। किशोर जी, संजीव जी, रंजू जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। What are the questions to be asked to the partner if requirement comes from SI, competition brand, pros and cons? Real difference with Plena, Paviro, Presidio, Presenza, Bosch, USP, PACO. Current challenges, pre-sales team number, concern person number if any in your absence. आप क्या करोगे, आपके जो रिस्पेक्टिव इनसाइड सेल्स टीम पर्सन है ना, आप उसी को कर देना कि भाई मेरे को 2 दिन के अंदर ये करके देना है, वो मेरे पीछे पड़ के करवा लेंगे। हेलो, हेलो, आवाज आ रही है? आ रहे अरे गॉट इट। तो अपना ये लास्ट पॉइंट का था ना कि भाई आपको अगर मैं नहीं हूँ नहीं अवेलेबल। नहीं उसका नहीं है। सी व्हाई आई एम टेलिंग यू लाइक कॉम्प्लिकेटेड, लाइक वी आर डूइंग लार्ज प्रोजेक्ट विथ अमृता ग्रुप, द सेम वे आई आल्सो, you know, like Delhi public school I'm speaking, directly I visited to the, you know, HR cabin, and we were discussing about the biometrics. Then I put one word, this announcement system we have, Sharif के साथ मेरा बात हो रहा है। The thing is that that point of time I can't discuss with the inside sales team who are, you know, they are recently come and they know only the how to quote, how to the coordination, all those things. बट मुझे आपका, अगर आप नहीं मिल पाए तो आप बिजी रहे तो मुझे एक बॉश का टेक्निकल हु इज वेल वर्स, उसका नंबर दीजिए, हम कोऑर्डिनेट करेंगे। बट प्राइस एवरीथिंग वी विल टेक इट फ्रॉम देयर देम ओनली। मैं आपको बॉस के पर्सन का नंबर दे देता हूँ, पहला तो जो आपको चाहिए वो। हाँ दूसरा कि बॉस का पर्सन जब आपके साथ बात करेगा ना, तो सर्टेन इंफॉर्मेशन वी मे हैव टू ट्रांसमिट और सर्टेन इंफॉर्मेशन वी शुड नॉट ट्रांसमिट, वो चीज आपको पता नहीं चलेगी शायद। और अगर मतलब सी in south region again, they are the competitor only for us, like in Ravel you have other distributor who are again your competitor. With same boss also there are other distributor who is again competitor of us also. वहाँ के साउथ की टीम का साउथ के डिस्ट्रीब्यूटर के साथ अलाइनमेंट होता है, हमारा जो अलाइनमेंट है वो वेस्ट की टीम के साथ है। तो व्हाट विल हैपन के अगर हमने कुछ भी ऐसी इंफॉर्मेशन पास ऑन करी कि भाई प्रोजेक्ट का कुछ डिटेल है या ऐसा कुछ जो हमें नहीं करना था, देन अगेन वी माइट गो इन प्रॉब्लम। और अगर आपका ऐसा कुछ भी डिस्कशन हो रहा है, चल रहा है, तो प्रायोरली आप एक बार इंटीमेट करके टाइम लेके कर सकते हो। जैसे आप बता रहे हो कि आपका अभी शेरिस के साथ डिस्कशन चल रहा है, तो आप मुझे, अगर आपने कल या परसों कुछ अलाइनमेंट किया है, तो आप मुझे बता दोगे कि हार्दिक भाई मैं परसों ये चीज अलाइनमेंट कर रहा हूँ कि मेक योर अवे सेल्फ अवेलेबल,
तो हम ये चीज कंक्लूड करेंगे। तो मैं मेरे शेड्यूल में से भी वो ट्राई करूंगा कि मैं उतना टाइमिंग जो है वो उसके लिए स्पेयर करके रखूं। See, why I'm telling you, because we stopped communicating with Lokesh because last time, no, he has not supported us. वो करना ही नहीं था No, इसीलिए no. We will not come to know who is that person, Lokesh, मैं वही because कह रहा you हूँ। went in the leave. That time we didn't know whom to contact. Okay, suddenly ये हो गया. So that is the reason even the Bosch CCTV I'm not communicating the South team, because I am only communicating with their West team. Abhishek is there. West only we are contacting, even though we knows the people. But that is why we are thinking actually. That is the reason I had asked. अगर वेस्ट का रहेगा तभी हम उसको ही करेंगे, साउथ का किसी को हाँ, तो हम आपको बात नहीं वेस्ट करेंगे। का पर्सन जो है अपने संदीप भाई करके उनका नंबर दे के रखूंगा, आप उनके साथ बात करो, कोई हाँ दिक्कत हाँ नहीं है। एनी टाइम यू कैन कॉल, आप आधी रात को भी कॉल करोगे चलेगा, हाँ। ठीक है ना। हम्म। देन करंट चैलेंजेस, अभी कुछ करंट चैलेंजेस का कुछ भी डिस्कस करना है क्या किशोर जी? The current challenges, few materials are not available. That was the challenges normally. बताइए Okay. क्या अवेलेबल नहीं है। संजीव जी, रंजू, ग्लेंसी जी, so आप बोल सकते हैं better than me. मैंने कल सारा मटेरियल दे दिया है, तो अभी कोई कुछ नहीं बोल पाएगा शायद। अभी देखिए कुछ मटेरियल का, लास्ट टाइम मटेरियल का थोड़ा ये आया नहीं था, मटेरियल नहीं था। किशोर जी आप अच्छे से जानते हो भारतवर्ष में मटेरियल की प्रॉब्लम्स आ रही है, मेरे व्हाट्सएप आप देख ही रहे होंगे, ये आ रहा हाँ है, ये हाँ। जा रहा है, फीफो बेसिस पे हो रहा है। अभी देखो ओईएम की ओर से ही कुछ नहीं हो पा रहा है, तो वी कांट डू इट। आज सुबह भी मैं ओईएम से बात कर रहा था, मैंने उसको वही चीज बोली, मैंने बोला फरवरी का मेरा ऑर्डर पेंडिंग है, मैं मेरे क्लाइंट को क्या आंसर दूं? वो बोले आंसर दे दो, ओईएम से नहीं मिल रहा है, उससे ज्यादा तो आप क्या ही कर सकते हो। मैंने बोला ऐसे मैं नहीं कर सकता ना। वो बोले आप बोले तो मैं आपको लेटर लिख के दे दूं, मटेरियल अवेलेबल नहीं है। मोर देन दैट दे आल्सो कांट डू एनीथिंग, वो भी एक सिस्टम के अंदर अपने जैसे ह्यूमन ही है जो फंसे हुए हैं। करेक्ट करेक्ट, अंडरस्टूड। तो अभी ऐसा है कि अपने ने मोस्ट प्रोबेबली सारे मटेरियल की जो चैनल है ना वो स्ट्रीमलाइन करने की ट्राई की हुई है, और हम ट्राई कर रहे हैं कि सारा मटेरियल जो है ना वो अवेल करवा दे, तो आपको उसमें कोई टेंशन नहीं रहेगी। अभी थोड़ा थोड़ा हम स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं उसको। नहीं, मेरे का कहना क्या है संजीव जी, any fast moving goods you can take it to your Hyderabad warehouse or Chennai warehouse, something like that. Can you plan? वो छोटा छोटा ऑलरेडी लाइक, मैंने वो लिस्ट भेजा हुआ था ना, वो ऑलरेडी हम प्लान कर रहे हैं फास्ट मूविंग प्रोडक्ट का। आप ठीक है जब वो लास्ट टाइम थोड़ा। आए थे अहमदाबाद, तब हमने एक चीज डिस्कस की थी ना, वो जो हमने लिस्ट भी बना के शेयर किया हुआ था कि हम हाँ 3 कंट्रोलर है, 500 स्पीकर है, एम्पलीफायर है, मिक्सर स्पीकर है, वो ऑलरेडी प्लान कर रहे, दैट इज ऑलरेडी इन प्रोसेस। ठीक है ठीक है ठीक है। ओके। उसके अलावा कुछ हो दूसरी कोई उसके चैलेंजेस? अलावा सी हार्दिक जी, you can teach us what is the market scenario, who all are the competitor, like we know only the ADI. See, ADI we know, Anixter we know, अभी then अभी अभी आपके लिए मार्केट में कॉम्पिटिटर ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ वेस्ट में एमआरएच को छोड़ के कोई नहीं है पूरे इंडिया में। नहीं, आप ई किसी को बिल्डिंग भी तो है बोलो, ना, ई बिल्डिंग। कोई बिल्डिंग नहीं है, वो कोई आपकी कंपटीशन में नहीं आएगा, क्योंकि आपके पास जो प्राइस है और ई बिल्डिंग के जो प्राइस है वो उससे भी अच्छे हैं। तो जो मेजर जहां से आपको प्रॉब्लम आ सकती है वो सिर्फ और सिर्फ एक एमआरएच ही है, और कोई नहीं है पूरे इंडिया के अंदर। But MRH only billing to ADI, MRH only, ADI is किशोर जी buying जब वो from. एमआरएच एडीआई को बिल करेगा तो एमआरएच खुद का मार्जिन रखेगा, एडीआई खुद का मार्जिन रखेगा, तो नहीं पहुंचेगा ना। हाँ आप yeah. बेशक बेफिक्र रहो, आपको मार्केट में कहीं से भी एडीआई की प्राइस की कंपटीशन नहीं आएगी। 0.0001 ADI का I परसेंट। know, ADI only few times they used to do one day sale, all those things. That point of time we वो will भी be वो facing भी the वो भी challenges. उनकी स्ट्रेटेजी क्या होती है, हर एक कंपनी का हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक होता है कि डेड स्टॉक जो होता है, नॉन मूविंग स्टॉक जो होता है, वो मोर देन 6 मंथ या 7 मंथ तक रहता है, तो वो उनकी जो लिक्विडिटी है, जो उनके मनी है, उनको निकालने के लिए
वो सीधा उनके प्रॉफिट मार्जिन को या फिर उनकी कॉस्ट को नेगेटिव में ले जाके कॉस्ट कटिंग करके सेल आउट कर देते हैं। वो हर एक कंपनी करती है, कभी कभार अगर हमें भी जरूरत पड़ती है तो हम भी ऐसा कर लेते हैं, बट वो नॉर्मली नहीं होता है। आप कोई भी एडीआई के अगर स्पेशल प्राइस भी आता है ना कभी भी, अभी आपको देखने में, आप मेरे को बताना, अपने उस पर डिस्कस करके उसको कंक्लूड करेंगे। हेलो किशोर जी। हेलो। हाँ। हाँ अभी आ रहा है। अच्छा। एंड और वन मोर थिंग, आपका कुछ ब्रांड का अवेयरनेस दे सकता है क्या? हु आर द ब्रांड कंपटीशन फॉर बॉश? हमको एम एम इसको तो मालूम है, व्हाट इज दैट, यामाहा, देन व्हाट इज दैट, यामाहा अपना कंपटीशन है ही नहीं, कॉम्पिटिटर वो ईवी का कॉम्पिटिटर है। हाँ ये व्हाट इज दैट, में 80s है हेनरिच एक। हेनरिच हेनरिच। हेनरिच का मैंने आपको पूरा बताया कि उसकी हाँ स्टोरी बता क्या दिया, है, नो वो नो, कैसे काम दे आर करता है। आल्सो इन द रेस बिकॉज हेनरिच आल्सो, यू नो, दिस वन JBL इज देयर। सी देखो किशोर जी, एक चीज है कि अदर लोग भी धंधा करने बैठे हैं, ठीक है, तो वो लोग भी अपने हिसाब से कुछ ना कुछ तो करने वाले हैं। अपने को फोकस ये करना है कि अपने पास क्या है और अपनी प्रोडक्ट को अपने कैसे डाल सकते हैं। आपके पास कॉम्पिटिटर के आपको नाम चाहिए, आपको बहुत सारे नाम मिल जाएंगे मार्केट के अंदर। आपको बोलेंगे एटीज है, हनीवेल है, फिर स्ट्राइक करके भी होगा, रावेल का भी होगा, आहूजा का भी होगा, हेनरिच का भी होगा, और ऑडियो ट्रैक का भी होगा शायद तक। बट द पॉइंट इज के उनके पास, अपने पास जिस तरह का, जिस लेवल का पावर है, जो सॉल्यूशन है, वो चीज है कि नहीं है। हनीवेल के पास मटेरियल की अवेलेबिलिटी नहीं है, मैं आपको बताऊं तो, मतलब पिछले 3-4 महीने से हनीवेल को मटेरियल ही नहीं मिल रहा है। उसके नहीं नहीं तो 2 या 3 ऑर्डर तो उसी वजह से अपने बॉश पे कन्वर्ट होके क्लोज हुए। तो सी, आप अगर ऐसा कुछ सोच रहे हो या ऐसा कुछ ट्राई कर रहे हो कि आपको उससे कुछ वैल्यू एडिशन होने वाला है, आई एम नॉट श्योर हाउ दैट कैन हेल्प। आपको सिर्फ अपनी प्रोडक्ट रेंज पे फोकस करके आप उसको प्रमोट करोगे तो ही ज्यादा वो यूजफुल रहेगा, मेरा ये मानना है। क्योंकि मुझे भी ऐसा बहुत मार्केट में आता है कि ये इसके स्पेसिफिकेशन आ रहे हैं, 8 जोन के ये स्पेसिफिकेशन आ रहे हैं। मैं सिंपली वही चीज बताता हूँ कि उसके अगेंस्ट में अपने पास जो है वो अपने को दे देना है, फिर उनके ऊपर छोड़ देना है। इसीलिए मैं आप ये कह रहा था कि हमें प्रोएक्टिव केसेस पे ज्यादा फोकस करना है, हम रिएक्टिव केसेस पे कुछ नहीं कर सकते। प्रोएक्टिव जब हमने केस बिल्डअप किया हुआ है, जब हमने कुछ बनाया हुआ है, तभी वो फायदे का है, अदरवाइज वो कुछ भी फायदे का नहीं है। किशोर जी बार बार बोल के म्यूट हो जाते हैं, मेरे को तो लग रहा है वो बैकग्राउंड में कुछ चल रहा है। नहीं नहीं, कॉल्स तो आ रहा है। ओके, दैट इज द रीजन। तो किशोर जी मेरे को भी कॉल आ रहे हैं, 12-15 मिस कॉल हो गए हैं, लेकिन मैं कुछ यहाँ पे प्रायोरिटी चीज लेके बैठा हूँ नहीं डिस्कस नहीं, करने के वो लिए, नहीं टाइम है। निकाल। सी आई एम लिसनिंग, आई एम responding to you. The thing is that why I ask you this kind of questions, because our team is not very much familiar with the PACO system. We know access control, CCTV, and we are masters. अपने आप डिजाइन करेंगे, whatever we want we can suggest. But PACO we are lacking because of these many things. That is the reason I had asked if you can brief some more, brand awareness, so that competition awareness that should be there. As a उससे क्या distributor, होगा? we should aware who all are our चलो, competitor. नहीं नहीं, उससे क्या Correct. होगा आप मुझे बताओ। उसके उसमें क्या होगा अगर क्या, हाँ। बिकॉज मेनी एरिया वी आर कॉम्पिटिंग विथ एडीआई एंड ई बिल्डिंग। ओके, साउथ का पूरा एडीआई है, बिकॉज ई बिल्डिंग हैज अ वास्ट कनेक्शन, इट इज ओल्ड टू किशोर रांची। जी हम अगेन एंड अगेन एक ही पॉइंट पे आके बात कर रहे हैं। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दैट पार्ट, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड नो ऑन नो नो एडीआई। नो, आई जस्ट टोल्ड यू, दैट्स इट, माय थॉट प्रोसेस, दैट्स इट। आई सर टोल्ड मैं माय आपकी थॉट थॉट प्रोसेस। प्रोसेस ही क्लियरली वो मैं कर रहा हूँ कि अपने पास एडीआई और ई बिल्डिंग के अलावा कोई तरह की कंपटीशन नहीं है। आप एक एक पॉइंट पे आके आप मेरे को बताओ तो मैं उसको प्रॉपरली एड्रेस कर पाऊँ। आप
जो भी कंपटीशन का बोल रहे हैं, आप थोड़ा एलोबरेट करके थोड़ा मुझे समझाओ तो मैं उसको समझ पाऊँ, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर पाऊँ। हाँ, वही busy. Last time, do you remember? Last time we have lost one order against what is that? A Delhi-based company. One Delhi, one Delhi-based company. They have supplied to our Chennai partner, and because their rapport was very ग्रोमेक्स इज good, देयर and दिल्ली बेस्ड कंपनी, और आपको हमने वो भी बताया था कि ग्रोमेक्स को भी जो मटेरियल सप्लाई किया था वो हमने ही किया था, और हमें वो किया था. सेल No, no. किया गया I था। am telling that scenario also will come. That is the reason we should know the competitor each other. That's it. Nothing else. हमको मालूम ही नहीं ना ग्रोमैक्स कौन है, हम पूरा ढूंढ लिया था. देन वी हैव फाइंड इट इज अ दिल्ली कंपनी. देन वी हैव स्पोकन टू इंटेक सिक्योरिटी दैट व्हाट इज नेम उसका पास. देन ही टोल्ड वी विल बी गोइंग विद दैट ओनली. देन व्हाट वी शुड डू किशोर एज जी, अ सी नो. आप अगर अदर अदर डिस्ट्रीब्यूटर को ढूंढने जाओगे, कंपटीशन को ढूंढने जाओगे, उससे अच्छा है कि आप आपके पार्टनर को ही ढूंढो ना। पार्टनर के साथ ही आप अपना रिलेशन इतना अच्छा नहीं बनाओ नहीं कि पार्टनर खुद ही आपको बता दे कि ये मेरे को यहाँ से ये प्राइस में माल आ रहा है, बोल तो मेरे को नहीं इतने में नहीं, देगा, वो तो फिर आ आप जाएगा. सी वो तो वो नहीं हो 100% रहा आ है ना। जाएगा. अदरवाइज अगर वो होता तो ऑर्डर ग्रोमेक्स के पास क्यों गया होता? No. See, why I am telling you, there is a two reason. Gromex is a world dealing fellow. Okay, there are a lot of years together. They are doing the business. We are a new. We are trying to, even though we are trying to give the material, that time material was not there. Then then price challenges. Then their relationship is good. They are world buyers. So suddenly मैं जाके कुछ magic नहीं कर अभी क्या सकता. है इंटेक We का? try. अभी कुछ है हमारा टच इंटेक के अंदर? इंटेक से मैं बात कर रहा हूँ. इंटेक से मैं अभी टच कुछ में. आई पिछले 6 महीने में कुछ भी इंक्वायरी या No, no, रिक्वायरमेंट आई no. उनकी पर्सन में? नो, लास्ट विजिट आई हैव डन. उसके बाद हमारा सुरेश जी कर डू रहा वी था. सुरेश डू जी हैज वी लेफ्ट. डू वी हैव एनी सिंगल रिक्वायरमेंट और इंक्वायरी फ्रॉम इंटेक? अभी तक नहीं है. मैं एक बार चेक करके बताता हूँ आपको. तो वही चीज है ना किशोर जी, मार्केट इज देयर, बिजनेस इज देयर, रीच इज ओनली नॉट देयर। नो, करेक्ट. वी आर आल्सो एड्रेसिंग द क्वेरीज. नो, ये देखिए 20 ब्रांड्स है. ओके, वी हैव 20 ब्रांड्स. Every product managers we are in touch. That is our responsibility to ask you the our concern need to be addressed to the product आपके managers. कंसर्न आप मेरे को अच्छे से आस्क करो तो मेरे को समझ में, आपका कंसर्न मेरे को अच्छे से समझ में नहीं आ पा रहा है। See, मेरा कंसर्न, सी दीज आर द थिंग वी हैव डिस्कस्ड. अभी क्या है, कुछ कंसर्न रहेगा तो वी विल गेट बैक टू यू. व्हाट एवर आई कंसर्न आई टोल्ड यू लास्ट वीक आल्सो वी हैव वो ऑलरेडी डिस्कस्ड. हमारा मल्टीपल डिस्कशन हो चुका है, वो बात पे तो ग्रोमेक्स वाली बात पे तब करेक्ट है इतना बड़ा हमने कम्युनिकेशन किया था। अभी ये भाई. बात इन को चेन्नई निकालने का मुझे I'll tell you, Chennai, Suresh has left. Ashwin has put the paper. Nobody is there. If one person is coming, then only we can able to improvise the sales. Or ये अभी ये हमारा प्रिंस, he is wonderfully doing good. He is existing follow up. Okay, because he is taking the backup. The same way Renju also coordinating for everything. Now it is need to think one person. If he is on board, definitely we can bring good business in Chennai also, and we are trying for that. That will be done very soon. पर वो हमारे डिस्कशन से कहाँ भी रिलेवेंट है। नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ भैया. मैं सी द थिंग इज दैट आई एम टेलिंग माई प्रॉब्लम. आई एम टेलिंग. ओके, इन एज अ प्रोडक्ट किशोर जी, मैनेजर यू नीड टू वी कैन अंडरस्टैंड माई डिस्कस दैट सिचुएशन आल्सो. वी कैन डिस्कस दैट पर्सनल। हाँ, no problem. I'm generally I told that's it. Okay, so competitor, why I told you the competition, you told that I let I us I forget the competition. I told you there are 5 to 6 competitor mainly: Honeywell, 80s, Hendrich, this Shrek and Ravel and Ahuja, right? So these all competitor have similar product in their mind. What we can do is we can only propose our brand and our specification against those brand or against those BOQ. More than that, we can't do anything until and unless we are proactivating our project. इसलिए Understood. मैं बार बार वो चीज को पुश कर रहा हूँ कि हमें नए केसेस पे काम करना है, हमारे हमारे खुद के प्रोजेक्ट डिजाइन करने हैं। ठीक है, understood. बीओक्यू डिजाइनिंग में और कोई क्वेरी और कोई चैलेंज? अभी प्रेजेंट चैलेंज मटेरियल का जो हमने डिस्कस किया, मटेरियल ऑलरेडी आपका जो है वो अलाइन हो रहा है। मैं सी मेरी भी बहुत सारी चैलेंज है,
लेकिन मैं मेरी चैलेंज अभी किस किस को बताने जाऊँ, ऐसा है। अब आपका अभी कंप्लीट करो, वो फिर हम अलग से जो भी डिस्कस है वो पर्सनली कर लेंगे। ठीक है। ग्लेंसी मैम, रंजू भाई, संजीव जी। बोलो ना टीम, you need to speak यार, even simply sitting it is not this thing, you all need to speak. We Not are. everybody. You've already told Hardik. Anything apart from that, anything you want which is related to किशोर sales जी बोल बढ़ाने रहे के हैं लिए कि कुछ मैं help तुम सबके चाहिए। बिहाफ में अकेला ही लड़ करूंगा क्या? तुम लोग भी तो कुछ बोलो, तो हार्दिक भाई कुछ करे, मैं अकेला ही यहाँ पे बदनाम हो रहा हूँ। हम इसलिए तो ये सेशन रखे हैं ताकि बात हो जाए। तो No, any additional help you want which is related to technical or anything I'm asking. किशोर जी नहीं, बोले बाद किशोर जी बोले बाद में मेरे को मत बोलना कि मैंने नहीं बोला था बोलने के लिए। ऐसा नहीं है। बताओ बताओ। नहीं अभी रंजू जी, डू यू हैव स्पेसिफिक इन योर माइंड? ऐसे सेशंस होते रहे, मतलब ऑफ कोर्स मैंने तो पहले से बोला होता हुआ था, रहेगा, हर मंथ अपने को ये मीटिंग करनी है। रिवीजन होता रहेगा। हाँ, रिवीजन होता रहेगा। अभी नेक्स्ट मीटिंग में मैं थोड़ा मेरे कंसर्न्स रखने वाला हूँ मेल डाल के। रंजू जी, यू हैव एनीथिंग टू से और वी शुड कंक्लूड? संजीव जी, रंजू। No, I have raised my concern already, and he has already addressed it. Okay. Ranju ji, I guess, is on another call. So shall we conclude? Shall we complete the meeting? Yes. ठीक है। यस, आप एक MOM ऐसा कुछ होता है किशोर जी, कुछ अगर मेरी ओर से शेयर करना है, कुछ डिटेल कुछ पेंडिंग लग रहा है तो आप एक बार शेयर कर देना। और पार्टनर BOQ, what we will do whenever any BOQ come, I will specially would suggest to design by your side only by having Teams call or phone communication. Is it fine by all? यस। No, if it is very basic, then वो क्या है, थोड़ा अभिराव जैसा थोड़ा आपका हेल्प ही चाहिए, because Kishore ji, for any BOQ, I have stated that we will have a Teams call or verbal phone call. I will guide, then you will prepare a BOQ. Is it fine by all? यस, Yes, that is fine. yes. Kishore ji Okay, fine. or Ranju ji? Again, Ranju ji is in एक मिनट his मैं own कॉल voice. करता हूँ, एक नहीं मिनट। कोई बात नहीं, बाद में हार्दिक जी, next time. और कुछ नहीं है। हम बस इतना चाहते हैं कि हम किसी पार्टनर के पास या एंड कस्टमर के सामने बैठे तो हम लोग उनकी क्वेरी समझ सके और एड्रेस कर सके। बाकी फिर क्योंकि जो भी इनपुट होगा वो हम भी आपको दे सके। जब आप बोल रहे हो ना कि प्रोएक्टिव केसेस में काम करो, तो ऐसा होना चाहिए ना कि हम बैठे हैं तो उनको भी लगे कि यस, हाँ, जो सामने वाला बैठा है उनको पता है कि क्या हम चाह रहे हैं। मैडम, आप बैठो तो आपको सिर्फ इतना कहना है, सर वी आर बॉस। इतना नहीं चलता ना हार्दिक जी, तो अरे आराम से चल सकता है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सर। वी आर Bosch authorized distributor and we have this inventory with us for project base and everything. In case if you have anything, let us know. हर एक कंसर्न कंपनी का, हर एक डीलर का, हर एक SI का एक ही रहता है, वो कोई भी एक सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटर से अलाइन नहीं रहेगा। वो हर एक बार अल्टरनेट ऑप्शन ढूंढता ही रहता है, क्योंकि उसको Definitely. लगता है कि शायद ई बिल्डिंग उसको अगर ज्यादा प्राइस दे रहा होगा, तो वो कंपेयर करते हैं ना मल्टीपल कोटेशन डेफिनेटली को। वो तो तो बाय डिफॉल्ट रहेगा ही। वो कंपैरिजन करने के लिए भी लेते ही है। और इवेंचुअली अगर आप एक बार सिर्फ टच भी करते हो ना कि सर वी आर डूइंग बॉश, तो वो अपने आप सामने से रिक्वायरमेंट आएगी। मतलब अभी मैं थोड़ा बहुत देख रहा हूँ इनसाइड टीम को, ऐसे ही बहुत सारी रिक्वायरमेंट सामने से आती रहती है। ठीक है, डन है, वो करते हैं हम। और मैं नेक्स्ट मंथ अपना बेंगलोर का और केरला का प्लान भी करता हूँ, फिर बाकी चीजें भी अपने डिस्कस करते हैं। ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो
अपने कंक्लूड करते हैं अभी। ठीक है। ठीक है, ओके, डन। Thank you all. Thank you very Thank much. you all. Thank Thank you. Thank you you. all. Yeah. Cool.